याद रखोगे? घर घर जाके लोगों को बताओगे? कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय कर्नाटका में सालाना 30,000 करोड़ रुपए का आसपास विदेश से निवेश आता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के आसपास आता था। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना आता था? कितना आता था? याद रहेगा? 30,000 करोड़। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भाजपा को आपने मौका दिया। भले हमें 3 साल मिले, लेकिन 3 साल में 3 गुना बढ़कर सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए हो गया। पहले कितना था, अब कितना हुआ? कर्नाटका का भला हुआ कि नहीं हुआ? कर्नाटका का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? नौजवानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार के अवसर बने कि नहीं बने? किसने किया? किसने किया? तो एक काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? कर्नाटका को आगे बढ़ाने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता कर्नाटका का विकास है। बंधु भगिनीरे, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा किसी आपदा के समय ही होती है। बीते 3.5 वर्षों में दुनिया पर, देश पर, कर्नाटका पर पिछले 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया। याद है ना? कोरोना 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई थी। ऐसी भयंकर महामारी में कर्नाटका को सफलतापूर्वक इस संकट से निकालने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? अगर बीजेपी न होती तो क्या होता? आपने केरल का भी हाल देखा था और उस समय महाराष्ट्र का भी देखा था। हमने कर्नाटका के हर नागरिक को, हर क्षेत्र को तेज गति से कोरोना का मुफ्त टीका लगवाया, वैक्सीनेशन करवाया। आप सबका वैक्सीनेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? हाथ करिए, हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको 1 रुपया खर्चा हुआ क्या? किसी ने पैसा मांगा क्या? बीजेपी ने यह भी सुनिश्चित किया कि 100 साल में आए संकट में कोई गरीब भूखा न सोए। गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज इस देश का हर नागरिक हमें आशीर्वाद दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि तब जो इतना बड़ा संकट आया था, दुनिया के बड़े बड़े महारथी देश अपने देश को संभाल नहीं पा रहे थे। तब दिल्ली में आपका एक ऐसा बेटा बैठा था जो हिंदुस्तान में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं देता था भाइयों। और इसलिए ये माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद मुझे काम करने की ताकत देते थे। मैं भी मंच पे आ रहा था, 2 माताएं मुझे, बहुत बड़ी आयु की माताएं, वो यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रही थी। इतना आशीर्वाद दे रही थी, मेरा हृदय भर आया
भावनाओं से भराया। भाइयों बहनों, हम हर गरीब परिवार को आज भी मुफ्त राशन देते रहते हैं ताकि गरीब के घर में बच्चा भूखा न सो जाए दोस्तों। और इसी के कारण पूरा कर्नाटका कह रहा है, माताएं बहनें कह रही है, नौजवान कह रहा है, गांव का किसान कह रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, इस चुनाव में कांग्रेस कैसे वोट मांग रही है? क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है हमारे नेता रिटायर हो रहे हैं, जाते जाते वोट दे दीजिए। बताइए, कोई रिटायरमेंट के लिए वोट मांगता है क्या? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए वोट दे दो, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे भाई, आप रिटायर हो न हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे, लेकिन कुछ जनता के लिए तो वोट मांगो, जनता के काम के लिए तो वोट मांगो। मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, बस जाते जाते कुछ दे दो। और दूसरा क्या? वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो। जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? देखिए भाइयों, बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने का। और उसके लिए हमारे पास रोड मैप है, योजना है, दृष्टि है, मेहनत करने की तैयारी है। कांग्रेस अपने दशकों के कुशासन से जन विश्वास खो चुकी है और इसलिए झूठे आरोप और झूठी गारंटी, यही कांग्रेस का एकमात्र सहारा बचा है। जबकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने, याद करिए, कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? पब्लिकली कहा था और बाद में कभी डिनाई भी नहीं किया। कांग्रेस के किसी नेता ने भी डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा था, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने बोली हुई बात बताता हूं मैं। उन्होंने कहा था, दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में जाते जाते वो 15 पैसा हो जाता है। 100 पैसे भेजते हैं, 85 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे खा लेता था? भाइयों बहनों, ये 85%, ये देखिए इनका खेल। 85% कमीशन वाली कांग्रेस, आज भी कांग्रेस की यही स्थिति है। वो कर्नाटका की हर योजना में
85% कमीशन खाने को तैयार बैठी है। सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी का हमारे संकल्प रहा है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, और कांग्रेस का हमेशा मकसद रहा है करप्शन फर्स्ट। कांग्रेस के शाही परिवार ने कई दशक तक देश पर शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश के विकास के बजाय सारा ध्यान अपने विकास पर लगाया। कांग्रेस ने देश में ऐसा सिस्टम विकसित किया कि इसकी तिजोरी हमेशा काली कमाई से भरी रहे, और इसके लिए कांग्रेस ने कागजों पर ऐसे करोड़ों लोग तैयार किए जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। मैं समझा पा रहा हूं आपको? कांग्रेस में अगर कोई विधवा पेंशन है तो ऐसे व्यक्ति को विधवा पेंशन मिलता था जो बच्ची पैदा नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई, और वो विधवा हो गई और कांग्रेस के खजाने से पैसा जा रहा है सरकार का। मैं आज देश को, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस के इस चाहता हूं। इस नकली नाम घोटाले का बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटका के लोगों को भी हुआ है। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस ने सरकारों के कागजों में ऐसे करोड़ों नकली लोगों के नाम डाल दिए जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे लोगों के नाम डाल दिए, और इन नकली नामों की संख्या कितनी है आपको चौंक जाएंगे। पूरे देश भर में जो नकली नामों की संख्या है वो कर्नाटका की कुल आबादी से भी ज्यादा है, कर्नाटका की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा है। उनके नाम पर हर योजना के पैसे जाते थे। इन नकली नामों पर पैसे भेजे गए और ये पैसा जाता था कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की काली तिजोरी में। कांग्रेस सरकार के दौरान, याद रखोगे आंकड़े? फिर से याद रखोगे? क्या हो जाता है आप लोगों को? गर्मी बहुत है। आंकड़ा याद रखोगे? एक एक आंकड़ा मैं बुलवाऊंगा, बोलोगे? 4 करोड़ 20 लाख नकली नामों को उन्होंने राशन दिया। कितने? दूसरा, 4 करोड़ नकली नामों को उन्होंने गैस की सब्सिडी दी। कितनी? तीसरा, कांग्रेस सरकार के दौरान 1 करोड़ नकली नामों को महिला कल्याण के नाम पर पैसा भेजा। कितना? कांग्रेस सरकार के दौरान 30 लाख नकली नामों को, नकली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भेजी जा रही थी। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? कांग्रेस ने देश के कोने कोने में करीब करीब 10 करोड़ नकली नाम सरकारी कागजों में डलवा दिए थे। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, 10 करोड़ नकली नाम वाले लोग कभी भी उनका जन्म ही नहीं हुआ, पैसे जाते थे। ये पैसे कहां जाते होंगे? कहां जाते होंगे? साल दर साल इन नकली नामों के नाम पर कांग्रेस की सरकारें पैसा भेज रही थी, राशन भेज रही थी, और ये जा रहा था
कांग्रेस के टॉप से बॉटम तक भ्रष्ट नेताओं की जेब में है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन कांग्रेस का ये सिस्टम बना रहता था। आप जानते हैं ये कांग्रेस के लोग मोदी पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मालूम है क्यों करते हैं? ये कांग्रेस के लोग इतना नाराज क्यों है मालूम है? इतनी गाली गलौज क्यों करते हैं पता है? इसका कारण है क्योंकि मैंने इनके बने बनाए जो भ्रष्ट सिस्टम था ना, उसी को कुचल दिया है। बीते 9 साल में मैंने कांग्रेस ने नकली नाम घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। गरीब का हक छीन रहे इन 10 करोड़ नकली नामों को हमारी सरकार ने गरीब के हक के रास्ते से हटा दिया है। आज गरीब को, देश के नागरिक को, देश के नौजवान को उसका हक मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है। ऐसा करके बीजेपी सरकार ने गरीब के, ये आंकड़ा याद रखना, बोलू ना, आंकड़ा बोलू, याद रखोगे? हमने जो कदम उठाए उसके कारण इस देश के नागरिकों के हक के, गरीबों के हक के, किसानों के हक के, महिलाओं के हक के, नौजवानों के हक के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। कितने? 3.25 लाख करोड़। कितने? 3.25 लाख करोड़। कितने? इतनी बड़ी चोरी। भाइयों बहनों, फिर ये मोदी को गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार गरीब की सेवा की भावना से काम करती है। गरीब का जीवन आसान बने, उसे नया अवसर मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में उत्तर कन्नड़ा जिले के 10,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिलना तय हुआ। बीजेपी सरकार में इसी जिले के 1.5 लाख परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुंची है। बीजेपी सरकार में इस जिले के 5 लाख से अधिक साथियों को जनधन बैंक अकाउंट खुला है। बीजेपी सरकार में इस जिले के लगभग 5 लाख लोगों को दुर्घटना और जीवन बीमा का सुरक्षा कवच मिला है। ये मैं सिर्फ एक जिले के आंकड़े बता रहा हूं जी। ये लोग पूरे देश के आंकड़े, इनके पास इतने नहीं होंगे जी। ये काम हम करते हैं जी। बंधु भगिनी रहे, बीजेपी सरकार की योजनाओं के बड़े लाभार्थी हमारे मछुआरे साथी भी है, हमारे फिशरमैन, हमारे आदिवासी समाज है, एसटी। ये बीजेपी सरकार है जिसने पहली बार मछुआरों के लिए, फिशरमैन के लिए अलग मंत्रालय बनाया। मुझे बताइए भाई, ये मोदी की सरकार बनने के बाद ये सी आया, दरिया अभी आया, समंदर पहले था कि नहीं था? मोदी आने के पहले समुद्र था कि नहीं था? कोस्टलाइन था कि नहीं था? फिशरमैन थे कि नहीं थे? फिशिंग का काम होता था कि नहीं होता था? लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार को दिखता नहीं था, ये मोदी को दिखता है। और इसलिए आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार फिशरमैन के लिए हमने अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग मिनिस्टर बनाया, अलग बजट लगाया, अलग अफसर लगाए, ताकि कोस्टल एरिया का विकास हो, फिशरमैन की प्रगति हो, वहां सुविधाएं बढ़े, फिशरमैन ताकतवर बने। और इतना ही नहीं, हमारे देश में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से कम पैसों में बैंक से ब्याज, बहुत कम ब्याज से पैसा मिलता है।
मैंने कहा जो फायदा किसान को मिलता है वो मेरे फिशरमैन को भी मिलेगा, और फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, बहुत ही मामूली बात से उसको पैसा मिलने लगा। बीजेपी सरकार ने पहली बार डीप सी फिशिंग के लिए नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी हजारों करोड़ रुपए की मदद की। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरों के विकास के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी राष्ट्रीय योजना बनाई है। स्नेहितरे, इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में भी मत्स्य संपदा और कोस्टल बेल्ट की सुरक्षा समृद्धि पर बहुत बल दिया गया है। फिशरीज डिपार्टमेंट का बजट पिछले साल की तुलना में करीब 40% बढ़ाया गया है। छोटे मछुआरों की ताकत बढ़े, इसके लिए पंचायत स्तर पर मत्स्य कोऑपरेटिव पर बल दिया जा रहा है। मछली के एक्सपोर्ट के लिए आधुनिक सुविधाओं के लिए भी विशेष सुविधाओं के निर्माण पर हमारा फोकस है। बीजेपी की प्राथमिकता मछुआरों की आय बढ़ाना है, उनको सुरक्षा और सुविधा देना है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी हमारे किसान भाई बहनों को यहां बहुत मदद मिली है। इस जिले के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 400 करोड़ रुपया 400 करोड़ रुपया इस जिले में दिल्ली से आया है और सीधा उनके बैंक खाते में आया है। कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई 85% कमीशन नहीं, सीधा 1 रुपया भेजा, 100 पैसा उसके खाते में पहुंचा। ये काम हमने किया है। सहोदर सहोदरियर, कांग्रेस के झूठे आश्वासनों का सबसे बड़ा हित हमारे शेड्यूल ट्राइब, हमारे आदिवासी समाज का भी हुआ है। कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया और आदिवासी क्षेत्रों को सुविधाओं से वंचित रखा। देश के अनेक आदिवासी गांवों में सड़क, बिजली, पानी सुविधा 9 वर्ष में पिछले मेरे आने के बाद पहुंची है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार इस देश में आदिवासियों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई थी। कांग्रेस सरकार की तुलना में इस वर्ष आदिवासी विकास के लिए बजट करीब करीब 5 गुना हो चुका है। 5 गुना। बंधु भगिनी, कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान आदिवासी नेतृत्व को भी आगे नहीं आने दिया। जब देश ने पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनने की भावना सामने रखी तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। और कांग्रेस का ये विरोध इसलिए नहीं था कि वो बीजेपी की उम्मीदवार थी इसलिए विरोध करे, वो तो मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस ने ये इसलिए विरोध नहीं किया कि आदिवासी महिला वो बीजेपी की कैंडिडेट थी। उनको अगर बीजेपी का विरोध होता तो फिर बीजेपी के ही एक नेता को उन्होंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया भाई? ये साफ साफ बताता है कि कांग्रेस का ये विरोध गरीब घर से आई हुई एक हमारी आदिवासी बहन के खिलाफ था। इसलिए आज पूरे देश में आदिवासी समाज कांग्रेस को सबक सिखाने का संकल्प करके बैठा है। कांग्रेस के खिलाफ ये गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। स्नेहितरे, यहां के यक्षगाना में इस क्षेत्र की ऊर्जा, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि साफ साफ झलकती है। मुझे संतोष है कि यहां की पहचान को, यहां जनजातीय लोक संस्कृति को संरक्षित करने वालों को प्रोत्साहित करने का अवसर हमें मिला है। हालक की स्वर कोकिला सुक्री बोम्बा गौड़ा जी हो या फिर पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा जी, इनको बीजेपी सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके अपना मान बढ़ाया है। जब दिल्ली में
कांग्रेस की सरकार थी, तब ऐसे सच्चे हकदारों को बहुत कम ही सम्मान होता था। आज जब कर्नाटका की धरती की ऐसी महान संतानें राष्ट्रपति भवन पहुंचती है, तो पूरा देश गर्व से भर जाता है। बीजेपी सरकार ने सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग दिलाया है। ये वोकल फॉर लोकल के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सहोदर सहोदरिये, अब कर्नाटका तेज विकास की पटरी पर चल चुका है। अब इस पर कांग्रेस का रिवर्स गियर नहीं लगना चाहिए। 10 मई तक आपको लगातार जुटे रहना है और एक बात घर घर पहुंचानी है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। इस संकल्प को सशक्त करना है। करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? पूरी ताकत से बताओ, करोगे? घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, पूरी ताकत से कराओगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? आप ठंडे पड़ गए। मेरा काम करोगे? जरा जोर से बोलो, करोगे? मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये मोदी का पर्सनल काम है, करना पड़ेगा। करोगे? अच्छा, अगर आप करने वाले हैं तो जरा अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करो जरा। मैं देखो किस कोने से आवाज लाइट दिखती है। सब दूर दिखाइए मुझे। आप अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करिए। मेरा काम करोगे? करोगे? मैं काम बताऊं? मैं आपको काम बताऊं? काम बताऊं आपको? देखिए, घर घर जाना है, जाकर के मतदाताओं को हाथ जोड़ करके कहना था कि मोदी जी अंकोला आए थे। क्या कहोगे? और मोदी जी अंकोला आकर के आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है, नमस्कार कहा है। इतना मेरा संदेशा घर घर बता दोगे? पक्का बता दोगे? जब घर घर जाकर के आप ये मेरा संदेश देंगे तो सब माताएं, बहनें, बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देंगे। उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी और उससे मैं और ताकत से आपकी सेवा करूंगा। कर्नाटका को नंबर 1 बना के रहूंगा। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। Are not rebooking them on another airline. They're saying refunds will come, but we don't know when those refunds will come. So essentially, if you were a passenger who was supposed to fly on Go First between the 3rd and the 4th of May, you're now stranded. You will have to shell out a lot more till the time your refund actually comes back. Vidima, also, what's the word coming in from the government, the aviation ministry? We had a reaction that came in from the civil aviation minister yesterday, who called it extremely unfortunate. Now, many are also questioning that possibly could we have seen a more proactive response from the government? Could we have seen the government step in earlier? Because as we've been reporting since yesterday, Shilpa, that the cash flow crunch for Go First is actually not a new issue. They have been defaulting on payments as far as their results are concerned. So possibly this could have been a situation that they could have tackled earlier. But as of now, the government has said that they will try and find a solution. But this also now raises a further question. Look at what's happening parallelly. You have Jet Airways, which is as good as zero now because you've had all the top executives who've quit the airline. So we don't know whether Jet also will fly again or not. We've seen what's happened with Kingfisher and now Go First also going down the drain.
Ridhima, if you can do some number crunching for us and take us through the amount of dues that is owed by the airline and what sort of relief any possible arbitration can bring about. Well, the companies actually refuse to indulge on those numbers. The kind of numbers that we're picking up by the means of sources are these. We're understanding that because there were about 25 of the A320neos, which means about 50% of the fleet as far as Go First is concerned, that is grounded because of faulty engines by Pratt & Whitney. The airline sources are telling us that about 10,800 crore revenue loss is what the airline is working with. Now, we don't have exact numbers in terms of what are the other kind of visa payments, creditor payments that have been made by the airline, which has further resulted in these losses. But Shilpa, you would remember this and our viewers would remember this. This is a very unfortunate pattern that has come into play, and we've seen this play out in previous cases as well. The minute you have 50% or more than 50% of your fleet being grounded in a country like India, the revival plans are as good as zero. And that's why when yesterday Go First announced that they will be filing for voluntary insolvency or bankruptcy, the question on its future is the biggest question that is being discussed by experts today. Owned by the Wadia Group, they've suspended flights for today, tomorrow and day after owing to a severe fund crunch. And Go First has also filed for bankruptcy. The airline has pending dues of oil marketing companies and more than half of its fleet has been grounded. The DGCA has issued a show cause notice to the airline after they cancelled fresh bookings, stating that no prior intimation had been given for the same, thereby violating provisions already laid out. Now, the airline has to respond within 24 hours as to why action should not be taken against them. Go First has blamed Pratt & Whitney for its insolvency, saying that they supplied an increasing number of failing engines. And they are saying कि अभी flight cancel है, no prior information, nothing. ऐसे अगर होगा ना ही उनके कुछ कोलैब्स हैं कि अगर मेरी आने वाली फ़्लाइट इंडिगो से है तो एटलीस्ट दे मस्ट हैव क्लियर दिस थिंग कि आप कुछ सपोर्ट होना चाहिए. सपोर्ट सिस्टम के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो सपोर्ट होना चाहिए कि आप इसको दूसरी एयरलाइन से हम आपको अरेंज करा रहे हैं सो दैट आपका इनकन्वीनियंस ना हो, आपका जो कंफर्ट जोन है वो ख़राब ना हो. जो जिससे हमने जो टिकट का वो कर रखा है, पेमेंट दे रखा है जिसका 4,500, वो भी हमें वापस नहीं दे रहे हैं ना. वो हमें 7 डेज में देंगे. तो फिर अभी अगर वो देते तो समझ में आता, हम कर भी लेते, बट अभी तो वो भी नहीं दे रहे. वो भी 7 डेज में देंगे और जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी 7 डेज में देंगे. तो कोई कैसे जाएगा? बहुत गलत, बहुत बुरी है. ना रिस्पांस बरोबर है, ना बात कर रहे हैं बरोबर उन लोग, ना कोई काउंटर में बरोबर रिस्पांस है उसका, और ना ही कोई पेमेंट का ऐसे बोल रहे हैं क्यों लोग. My colleague Ridhima Bhatnagar is joining us with more. Very good morning to you, Ridhima. Ridhima, before the rest took them to the NCLT, the CEO has confirmed that they filed for insolvency proceedings. But perhaps an arbitration could have bailed them out of this mess. How do you think this is likely to play out? Morning, Shilpa. As you rightly pointed out, there are many questions now as to what could have been an easier step to try and get out of this mess, because as of now, no easier way of putting it. It's a complete mess for passengers who are stranded and for the future of the airline as well. Let's just give a sequence of events to our viewers to help them understand what really has happened. Now, yesterday you had the airline informing that they will not be operating for the 3rd and 4th of May, that is 48 hours. They blamed this on Pratt & Whitney, saying because of faulty engines which have been given by Pratt & Whitney, this has resulted in grounding of 50% of their fleet. But what really stumped the industry, Shilpa, was when they announced that they are also filing for voluntary insolvency, which essentially means bankruptcy, which now means there is a question mark as far as the future of the airline is concerned. Now, remember, the airline requires about 103 engines by Pratt & Whitney, and they have about only half of them, which means 50% of the fleet is grounded. Now, the airline is saying that because of this grounding, they've had to pay revenue loss of almost 10,800 crores. But as we pointed out, this has now resulted into a legal battle between Pratt & Whitney and Go First as well. If you look at the statement that's coming from Pratt & Whitney, they in fact have put the blame back on the airline. What the legal saga will look like, that's one part of the story. What we're also now understanding, we heard from some passengers, they are stranded. While the airline has said that they will be giving refunds, there is no clear timeline. The other aspect... Good afternoon, hello and welcome. You're watching CNN News 18. I'm Anusha Sonia. Top focus this hour.
The battle for the state of Karnataka. After the release of Congress Party's manifesto, you have Prime Minister Narendra Modi, who has lashed out at the Grand Old Party on a host of issues. The Prime Minister slammed the Congress Party for their appeasement politics, and not to forget that the last leg of the campaigning is going to be a heated battle like it's turning out to be. The Prime Minister went on to say that the Congress Party is pleading for votes in order to get their retiring leader to win in Karnataka. He also stated that when voters press the button to vote, they should think of Bajrang Bali and then cast their vote. The Jai Shri Ram, the Bajrang Bali and the religious angle clearly has entered into the political discourse. There are various units of the Bajrang Dal, the outfit, the right-wing outfit, that have staged protests in response to the Congress Party manifesto that promise that if they come to power, they will ban Bajrang Dal like PFI has been banned. Congress chief Mallikarjun Kharge has lashed out at the BJP, saying that the party pushes politics of polarization. The reactions on the story. कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लेती है, बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಓಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. So that was the address of the Prime Minister that you just heard some time ago, and in this last leg of hectic political campaigning which is happening on the ground. While the Congress Party sticks to its charge of 40% commission that allegedly BJP has taken and various issues, civic issues that have been raised, the BJP continues to talk about some important points. One, of course, like we have seen, the religious overtones that have clearly entered the political discourse. Well, let's also listen in to some breaking bit of information which is coming in right now. Mr. D.K. Shivkumar has made the Congress Party stand clear on banning the Bajrang Dal. He says that they indulge in moral policing, violate law and order, adding that Congress Party wants to maintain peace in the society. That's what Mr. D.K. Shivkumar is saying. Let's listen. ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ. ನಾವೇನ ಭಾಳ ಪ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತರು. ರಾಮನ ತಂದೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಬಂಟ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಂಜನೇಯ. ಯಾಕೆ? ಆಂಜನೇಯ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀವ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಂಜನೇಯನೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಜರಂಗ ದಳಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಜರಂಗಿನೇ ಬೇರೆ, ಆಂಜನೇಯನೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. The Bajrang Dal would be banned like PFI has been banned. That's the parallel that the Congress Party has come up with. And in the face of repeated attacks that have come in from the BJP against the Congress Party, saying that it's a false equivalence which has been drawn, you have Mr. D.K. Shivkumar, the tall leader of the Congress Party, saying that Bajrang Dal is an outfit which is known to morally police people on the streets. This is also an outfit which is known to create law and order problem. And because they want a peaceful society, they will go ahead and ban it. My colleague Akshara with us on the broadcast. Akshara, what did Mr. D.K. Shivkumar had to say, apart from the fact that he spoke about moral policing and other issues? How is the Congress Party defending the barbs coming in from the BJP? Well, you see, whenever such issues came up, even before when Mallikarjun Kharge's personal jibe issue came up, the state leadership of the Congress here made sure that they will divert this particular discussion from all the other issues to the main issue, that is
the unemployment, inflation, on corruption charges. Even right now, DK Shivkumar, who defended this particular move, stating that they are involved in moral policing and many other activities that violates law and order. On the other hand, people also must look at the other issues such as what has the state, the BJP leadership has given to the people here of Karnataka, because the people here face many problems in rural Karnataka as well. There are lack of transport facilities, infrastructural facilities, development work that needs to be taken care of. Yes, the Congress leadership is trying to control the damage which could take place because of all the other issues such as personal child or banning of Bajrang Dal, and shift the focus towards other issues which are more important. So that's what we are hearing from DK Shivkumar. Apart from defending his move that Bajrang Dal will be banned, and be it any other organization that disturbs the peace and harmony in the society will be banned. So Congress has made its stand clear on this issue. Akshara getting us all the details, and let's also dip into what Prime Minister Modi earlier said. He spoke on this issue of banning of Bajrang Dal that the Congress party has spoken of in its manifesto. Listen in what the Prime Minister said. जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। My colleague Ritu is also joining us on the broadcast. Ritu, how much of this issue is resonating on the ground, the Bajrang Bali issue and Jai Bajrang Bali? That's what yesterday was said, that Congress party now fears this slogan as well, Jai Shri Ram. Religious overtones have clearly entered in the last leg of campaigning. Tell us, what is the sense you're picking up from the ground? Firstly, the big statement coming out from Prime Minister Narendra Modi while he is in the Uttar Kannada region of the the coastal belt of Karnataka, where he is saying that anyone who is really going to go for the voting should ensure that he or she is in fact chanting Jai Bajrang Dal, the chant in fact. So that's a big statement coming out from Prime Minister Narendra Modi. But on the other hand, you see that the Prime Minister is in the Uttar Kannada, where we did a ground report trying to understand that what are the sentiments of the people, what really that the voters need at this point in time, because the coastal belt of Karnataka, we did see that how many of communal violences had occurred, and how is that the Hindutva ideology plays an important role there, and again a stronghold of the BJP as well. So while trying to understand what really matters for the voters, you see this time that in the Uttar Kannada, especially in that region particularly, that the people really are looking for a change right now, because they complain about the lack of infrastructure. There's no proper development that had taken place, and however that they are also deprived of the basic amenities as well. So of course that the people say that this time they need a change in the party and in the leader as well. So especially about the public representative that they are looking forward to, that anyone who will give them all that they need is one that they are looking for But however, now the Prime Minister Narendra Modi's statement coming out is an important point here again, because we are seeing that how the Congress and BJP is at the loggerhead, and on the other hand the JDS leader Kumaraswamy goes on to say that what is the use of banning in the Bajrang Dal, because it is most of them who are part of this organization comes from a backward community, and also that they are very poor and innocent youths are being... All right, Ritu, and as you get us all those details, we right now are cutting across to a roadshow of Mr. JP Nadda. He's also campaigning in the poll-bound state of Karnataka, and he's speaking on PFI. Let's listen in. रामनगर में बताओ, राम टेम्पल चाहिए ना? चाहिए ना? तो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा है उसको पूरा करेंगे, और ये हम ही कर सकते हैं, हमारे ही पार्टी कर सकती है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इसलिए गौतम गौड़ा जी को आप चुनाव जिताइए और रामनगर का विकास करिए, अच्छे स्कूल बनवाइए, अच्छे स्वास्थ्य संस्था बनवाइए, अच्छी सड़कें बनवाइए, विकास का स्वाद आपको भी आए, इसकी हम चिंता करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेपी नड्डा साहब जेपी नड्डा जी की
भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के गौतम गौडರಿಗೆ ನಿಮಗೆ. Well, that was Mr. J.P. Nadda in the poll-bound state of Karnataka. The top brass of the BJP has hit the ground running. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Party President Mr. J.P. Nadda, a special force, political force and might behind the new candidates that have been fielded in the last leg of the campaigning which is going on, because in the next 4 to 5 days the campaign would have to stop before 2 days before the polling. Various issues apart from the corruption charge that the Congress party has raised, there is now this equivalence of PFI versus Bajrang Dal that Congress party, many would argue, gave on a platter to the BJP. The BJP argues that this is clearly an example of appeasement politics which is done by the Congress party. PFI is a terror organization, and based on the reports and evidence, this decision was taken by the Union Home Ministry. Bajrang Dal is not known for any kind of terror activities, and to make this equivalence is a false equivalence which is being made by the Congress party. Well, those are the visuals coming in from the road show that Mr. J.P. Nadda is holding. We also heard the Prime Minister, who was earlier speaking in Karnataka, and he pointed out the issue of how appeasement politics is something that the Congress party has traditionally stood for. Facing a tough competition from the JDS and the Congress party, the BJP would want to ensure that they come back to power. To come back to power, not only they need to ensure that they continue to hold on to their strongholds, which are the coastal Karnataka region and the urban centres, but also expand their reach far beyond these two traditionally known areas, which are the stronghold of the BJP. They would want to expand their area to the old Mysuru region, to various other parts. My colleague Ritu with us on the broadcast. Ritu, terror appeasement, that's what the Congress party is saying. That's what the BJP argues that has been the brand of the Congress party. Of course, there's a response that has come in from the Congress as well. Uttar Kannada, you've been reporting from that region. Tell us about the key development issues that you were talking about. And when the Prime Minister makes an address there, what are the other critical issues that he has tried to address there? What is the messaging that the BJP takes on the ground? Yes, you see the coastal belt of the Karnataka, that we do know that there is a huge chunk of the fishermen community who resides there, and they really have a local issues there that they are battling with, and they want some public representative and also a party who can actually address those issues. Every time that what the locals in fact have to say, that every time that any public representative comes to their door asking for a vote, has always promised them that they will give them a proper roads, and also that the water breaking, especially that the fishermen community has been demanding from quite a long time, and also dringing there again that they really need during the fishing process, that they take up actually. And also on the other hand, the water facility and also the proper bridges that they really need when there is a heavy downpour in a coastal belt. So there are a lot of local issues that they are actually facing, and they need a party or a public representative who can actually address these issues. But on the other hand, you see in the coastal belt that we do know that how is that the Hindutva plays an important role, because it happens to be the strong belt of the BJP, and every time that they have really gone on to win majority of the seats, while Congress has just was able to win 1 or 2 to 3 seats maximum that we really can talk about that. So yes, there are many issues that they are battling with, but they need this time a change. On the other hand, you see Prime Minister Narendra Modi or J.P. Nadda or any BJP leader at this point in time is going on and mentioning that how important it is to ensure that the peace has been restored in the state, and for that reason that the party decided to ban PFI, and also now Congress party coming out and deciding to ban the Bajrang Dal. This really shouldn't go down well with most of the Karnataka people, and they should be giving them a befitting answer during the election. That's the discourse coming in right now. There's a breaking news, a breaking bit of development coming in, cutting across to those developments. And this is the latest news coming in from the Congress camp, where some leaders are now questioning the pitch to ban Bajrang Dal. Acharya Pramod says that the outfit is not a terrorist organization. Let's listen in to the word coming in from Acharya Pramod. पुलिस में जो है इस समय बड़ी चर्चा में है कि जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी आया है कि बजरंग दल और उस जैसे संगठनों को बैन कर दिया जाएगा। बड़ा विवाद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है, लेकिन वो आतंकवादी संगठन नहीं है। और कर्नाटक के चुनाव में पार्टी के मैनिफेस्टो में ये शामिल करना, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं
जो बीजेपी को मदद करने वाले फैसले करते हैं। बीजेपी चाहती है कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू यानी कि हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, प्रूव हो जाए। जो काम बीजेपी चाहती है वही कांग्रेस के कुछ नेता कर देते हैं। कर्नाटक में हम जीतने के कगार पे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गले में पहले जहरीला सांप पड़ गया, अब बजरंगबली को छेड़ दिया, अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। इसकी क्या जरूरत थी? कर्नाटक का चुनाव हम वैसे ही जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी जी की पदयात्रा में, प्रियंका गांधी जी की मेहनत में पलीता लगाने का काम करते हैं। एक कुछ नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी आपने सवाल उठा दिया। ये जहरीला सांप वाला बयान तो उन्हीं का था। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय खड़गे जी ने अपने बयान पर खेद प्रकट कर दिया था। तो जब वो खेद प्रकट कर दिया तो विषय खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे गले में जहरीला सांप जिंदा पड़ा हुआ था, अभी तक उसी को हम निकालने में लगे थे। एक नया राग छेड़ दिया बजरंगबली का, तो इसकी क्या जरूरत थी? तो इसलिए मुझे लगता है, और मैं इस पे साफ कर देना चाहता हूं कि बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है, ये तो माना जा सकता है, लेकिन बजरंग दल आतंकवादी संगठन नहीं है। और अगर बजरंग दल आतंकवादी संगठन है तो फिर भारत सरकार पूरे देश में उसे बैन करे। ये फैसला, ये अधिकार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। क्योंकि कर्नाटक के अंदर अगर आप बजरंग दल के ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं, बजरंग दल को बैन करते हैं, तो इसका नुकसान तो पूरे देश में होगा। तो क्या कहेंगे फिर आप? संगठन से क्या मांग करेंगे? इस तरह की गैर जरूरी चीजों की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैनिफेस्टो पर पुनर्विचार करना चाहिए। Cutting across to my colleague Pallavi, who's with us on the broadcast. Pallavi, what Acharya Pramod is saying is making a lot of sense. When the Congress party had the narrative going in their favor, there was no need to make a personal jibe at the Prime Minister. There was no need to rake up these issues which BJP perhaps has an edge on. And a lot of political experts and pundits would agree with what Acharya Pramod is saying. Well, frankly speaking, in private, many of the Congress leaders would agree with what Acharya Pramod is saying, because when I went to speak to Congress leaders in private, they said that, whatever needs to be done about the Bajrang Dal could have been done after the elections were over. At this point of time, when the Congress has been largely very, very careful about not allowing for any polarization or any diversion to take place for the core issues the Congress has been raising, which is the corruption, unemployment, and so on and so forth. When the moment you start talking about things like banning Bajrang Dal, you've actually given a huge issue to the BJP on a platter. And therefore, you cannot blame the BJP if they are going to use it against the Congress. So, for example, the Prime Minister beginning his rally with Bajrang Bali ki Jai, two protests being carried on against the Congress leaders, all of them are a part of the BJP's renewed strategy in the battle for Karnataka. Pallavi, moving forward in the last few days of campaigning which is left, how much of these issues is it possible for them to create resonance on the ground? Because as Acharya Pramod was pointing out, that the narrative was in their favor, and in this last leg there was no need to create these kind of ripples which might not work in the favor of the Congress party. See, there are portions like North Karnataka, which is in any case a BJP stronghold, but the Congress also wanted to do well there. So they were also being very careful. For example, Ligayat vote bank, the Hindutva vote bank, and Jagdish Shettar leaving the BJP to join the Congress, even though the Congress party trying to make the point that look how the BJP has turned its back to the Ligayat, and Congress was trying to also play the Hindutva card. But what happens is whenever these kind of comments takes place, the jury is still out whether this is going to work for the BJP or whether it's going to work against the Congress. Is the last minute momentum of the election campaign which gets completely disrupted. And in this case, it is something which is getting disrupted, the BJP hitting out at the Congress, and the Congress is going to be left to defend itself all the time. Pallavi, the state of Karnataka votes in a single phase, and the last moment disruptions can be a problem or an advantage for a particular political party. Both the Congress and the BJP, I presume, are aware about this.
Of course, they are aware about this, and also, Anusha, it's the last few days which becomes the most fiercest one as far as campaign is concerned. Yeah. Which is why when the campaign ends on the 8th of May, before that on 7th and 6th and 7th, you're going to be having the Prime Minister doing extensive road shows. You're also going to be seeing Rahul Gandhi possibly doing a road show in Bengaluru on 8th, ending up possibly a press conference that is also being mulled. So the last push becomes very important. I would say the last 24 to 48 hours are very, very critical for the voter to make up their mind. Here we're talking about the floating voters, and in a place where it's a cliffhanger of the Karnataka elections, it's the floating voters are the ones which are being now tapped by both the BJP and the Congress, and therefore both parties have to be doubly careful about what kind of a campaign is being run. Pallavi Ghosh carrying us all the details on that important story. Let's also listen in to the political voices coming in. देखो, कांग्रेस ने तो भगवान राम के प्रति भी वही रुख रखा और बजरंग बली के खिलाफ भी वही रुख रखा। कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते चलते वो इस गिरावट तक आ गई है कि वोट बैंक के लिए कभी ये भी कह देते थे कि भगवान राम तो काल्पनिक, दुनिया की कोई ताकत ना बजरंग बली को रोक पाई है, ना उनके भक्तों को रोक पाएगी। दूसरा मैं कहूँ, उनकी भाषा कांग्रेस की, मोदी जी को मौत का सौदागर कह देना, नीच कह देना, कांग्रेस की मानसिकता क्या है, हताशा निराशा क्या है और कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है, और इसका जवाब हर चुनाव में जनता ने दिया है। प्रधानमंत्री ने जो अपनी रैलियों में कल कहा कि पहले कांग्रेस के लोगों ने राम को लॉक में बंद किया और अब बजरंग बली को, ऐसी कोई भावना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कह रहा है हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, उसका वो भावना समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया, अगर मान लीजिए कोई हेट स्पीच दी और कार्रवाई नहीं करी गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। पूरे देश के अंदर कोई संगठन हो, हिंदुओं का हो, मुस्लिम का हो और किसी धर्म का हो, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। सवाल है कि देश में जब शांति, सद्भाव, प्यार मोहब्बत रहेगा तभी देश एक व अखंड रहेगा। जो इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं सर कि जहां आपकी सरकार है वहां बैन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वादा कर रहे हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां बैन करेंगे क्या? लिखा हुआ है, कानून के अनुसार लिखा हुआ है, मैनिफेस्टो के अंदर। ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿತಾವಣೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮೂಲ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಬಜರಂಗ ದಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬಜರಂಗ ದಳದಲ್ಲಿ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮಾಯಕತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೆದುಳಿಗೆ ತುರುಕಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸದೆಬಡಿದೆ ನೀವು ಆ ಸಂಘ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹುಶಃ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು, ಆಗಲೇ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗೇನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. कांग्रेस का इस मैनिफेस्टो के साथ बड़ा एक तरह से खुलासा हो गया है कि उनका पॉलिटिक्स और राजनीति इस हद तक बेशर्मी का एक पॉलिटिक्स बन गया है। वही एक तरह से पीएफआई के सपोर्टर्स को अपीज करने के लिए बजरंग दली, बजरंग हनुमान भक्त को बैन करेंगे करके उन्होंने एक अपीजमेंट का एक कॉन्सेप्ट उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने डाल दिया है। मैं मानता हूँ उनके पॉलिटिक्स के 3 पिलर हो गए हैं। एक तो वो झूठ बोलते हैं, बहुत फेक प्रोमिसेस करते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर को गाली गलौज देते हैं, और तीसरा एक बेशर्म वाला अपीजमेंट पॉलिटिक्स का रवैया अपनाते हैं।
what level of discourse and what level of debate you can expect. He is the highest office bearer of our country. He had insulted Lord Hanumana. We are not going to tolerate that. I am just asking what Lord Hanuman denotes to you, Prime Minister, sir, when we are saying that every individual or group of individuals who are promoting hatredness in the society, who are promoting enmity in the society, who is danger to the brotherhood in the society, we are going to take strict legal actions as per law against those organizations and individuals. Why do you believe that this is such an important issue that the people, the ordinary people of Karnataka should care? This is not just about banning A or B. This is more importantly, it displays the mindset of the Congress party, which if you remember, Zaka, in right after the 26/11 terrorist attacks, Rahul Gandhi, while speaking to the US consulate and the other members of the United States government, had said that Hindu terror is a far more serious threat to India than any other kind of terrorism. And the attempt to falsely create an equivalence between a cultural organization, a nationalist organization like the Bajrang Dal, with a terrorist organization like the PFI, which the government has already banned, is a display of this anti-Hindu mindset. Bajrang Dal has been a first line of defense for the Hindu society. It is a vibrant cultural organization organizing bhajana mandalis, bhajana melas and many other cultural programs. Why should this organization not be banned if PFI is also banned? That's the claim of the Congress party. Theft, even assuming that these charges are true, because most of these cases were filed against these activists of the Bajrang Dal when the Congress was in power, in an attempt to curb them, in an attempt to demoralize the organization. Therefore, I would say that all of these charges, or rather I would even give a benefit and say most of these charges are frivolous and false. The charges against the PFI and SDPI and Campus Front of India and such other organizations is waging war, the state of India, conspiracy against the sovereignty and integrity of India. Can you compare these two charges on the same place? The Bajrang Dal members here all protesting in the Vijayanagara of the Bengaluru. They were also chanting Jai Ram, Shri Ram all this while, and they're going on and chanting slogans against the Congress leaders DK Shivakumar, Siddharamaiah and many others as well. केरला में वही PFI, SDPI से समर्थन लेते हैं. मंगलूर कर्नाटका के जो कोस्टल एरिया मंगलूर में उनकी जो वोट है SDPI और PFI से मिला जुला है और उनको बैन करना ही है. तो कर्नाटका में जितने मुसलमान लोग गो हत्या करते हैं, तस्करी करते हैं, उनको बैन कीजिए. पहली बार हिंदू जो संगठन है कभी किसी के ऊपर हत्या नहीं की है, कहाँ बम नहीं फोड़े हम लोग. बजरंग दल करता है लोगों की सेवा करना. कोरोना में बजरंग दल एक ऐसा संगठन था, ऐसे बहुत सारे संगठन थे. सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक बजरंग दल ये पूछ के खाना नहीं देता था कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो या सिख हो. अभी 10th का इलेक्शन चल रहा है, उसी कारण से मुसलमान का वोट कहाँ उसको डर रहे हैं. मुसलमान का वोट कहीं भी लास्ट टाइम इलेक्शन में थोड़ा बहुत हमारे लिए भी आया था. बहन लोग, मुसलमान का बहन लोग बहुत हमारे लिए मतलब बीजेपी को दिया है. वही देयर इज ओनली वन रीजन, दे वांट टू कंसोलिडेट Muslim vote only for the Congress. Otherwise they would have not told. They doesn't have any one reason to show we have done anything wrong against humanity or any nationality. And while the Prime Minister is campaigning in the poll-bound state of Karnataka, he also met Tulsi Gowda and Sukri Bomagowda, the Padma recipients from the state of Karnataka. Both these women have worked tirelessly in the field of environment. They are known for their special knowledge, a special kind of heritage that they have preserved for decades. And this was an effort that was lauded by the Prime Minister. It was lauded through the Padma Awards. Tulsi Gowda, she is an Indian environmentalist. She's from Honai village in Ankola, where the Prime Minister was making an address, and she planted more than 30,000 saplings.
Pallavi is with us on the broadcast. Pallavi, the pictures on the screen right now, Prime Minister bowing down and meeting these extraordinary women. You know, the whole idea of the Padma Awards no longer being meant only for the entitled, but for the real people who have contributed to social development or for society for that matter. That has been people's Padma. Padma for people has been the kind of cry coming in really from the government. I think what the pictures you're seeing today when the Prime Minister is meeting Tulsi Gaura, during his campaign, and who actually comes in from the area where he was campaigning today, and as you pointed out, environmentalists. Those pictures, I think, speak 1,000 words and several messaging. One messaging, of course, is that giving Padma awardees to those who really have contributed to the society. That's one. Second, both of them are from Karnataka, and this is the battle for Karnataka we are talking about. And these are the people who, for example, are not very high profile till they got the Padma Award, but people who live there in and around who benefited from, say, a Tulsi Gaura's work are the ones who understand the significance of receiving a blessing from her by the Prime Minister. So these are also very important, politically important messaging also coming out when the Prime Minister meets them. Pallavi, I believe it's a pertinent occasion to talk about how there's been a special connect through the Padma Awards. And as you said, not just the entitled, but people who actually made change on the ground. I'm reading about Sukri Bomagowda and how she has tirelessly worked as a folk singer to preserve the traditional tribal music, something that was lauded by the government of the day and should have been lauded. Absolutely. I mean, you know, the whole procedure of receiving and getting the Padma Awards, it's now open. You know, anyone can apply for it. You can recommend people to get the Padma Award. And, you know, these recommendations don't need to come in from those who are higher ups or influential or powerful people. It will come in from people who have benefited from the work. And, you know, why just them? I mean, just about look at the list of the Padma awardees. Whoever they've touched, whoever they've benefited, also acknowledge that the importance of Padma Awards. Look, any country which gives those big gallantry awards or civilian awards usually give it to people which sends out a messaging that we are awarding them for the work that they've done for us. I think that's the larger messaging which comes in from the national perspective, a Padma Award for everyone, and second in the context of the battle for Karnataka as well. Pallavi Ghosh reporting from the ground. She's been getting us all the updates from the poll-bound state of Karnataka. Thank you so much, Pallavi, for getting us all the details. Here's a special report that my colleague Shivani Gupta gets for you, speaking to people over Samidli and telling us about what people really think in the upcoming and are going to be the key issues in the upcoming elections for the state of Karnataka. Listen in. Bengaluru is known for its very old, unpretentious and very loved eateries. So as we try to catch the pulse of the public ahead of the Karnataka elections in Bengaluru, let's try and gauge their mood as we also savor some lovely idlis. Karnataka, there are many issues that have come to light that matter to the public. But for a city, that to a city like Bengaluru, the issues are quite different from the rest of Karnataka. I'm here in Veena Stores, which is famous for its idlis. So as I savor some of them for the very first time, let me try and talk to some of the people. You can see there's a wide age group that is there behind me. Let's try and talk to them. There's been a lot of developments in terms of city roads, the footpaths, you know, the electricity, the metro. There's been a lot of development. But we also hear of these persistent issues in Bengaluru of flooding and, you know, of traffic, potholes. I would rather blame the apartment owners also for not following some certain systems and all that. You know, the city is growing beyond our expectations. So I think there could be some minor issues like this, but yeah, you know, way to go. They will definitely put that into place also. So, according to you, does the Congress have a chance this time in the Karnataka elections, looking at the entire state? I'm sorry, ma'am? They shouldn't be given a chance at any cost. No. Why is that? Everybody knows the reason. When you say growth, it should also be beneficial for people who stay there. So if that is not happening, how do you term it as growth? Right. You know, if people can't have good air to breathe, I mean, what's the use of earning so much of money? And so I think we need better infrastructure, like you said, a holistic approach to development. BJP government already what they are doing is they are expanding to rural places like Belgaum.
they have brought IT park there. For development of the country, airports are very much necessary, and BJP is doing extremely good job of doing maximum airports in Bangalore. And the pollution, you can't help it because the population is growing and land is that much, vehicles are coming. Everybody wants a comfortable life. And Modi is great. You are certainly a BJP fan, but please. I was in Congress. My father was MLA twice by Congress. He was MLA, wow. And I asked ticket in Congress for 4 times as a KPCC member. They denied me because I'm an honest person. I want to ask you. People are saying that this is a very tough election for the BJP. That actually the Congress has an upper hand. What do you think? Actually, Congress has done nothing for 70 years. Rahul ji I met twice. He is not a leader. He cannot become a leader at all. Modi is the only Modi, and he's the world leader. Hats up to him. We need a change. Okay. We need a government change. We need some people who think about the developments, not about only the politics. We want only the developments to be shown. If Modi comes and goes, people think that they are going to change the vote pattern, everything. That is not the base. We should have some improvements in Bangalore city and whole of Karnataka. I think BJP has the edge. Okay, why is that? People are complaining a lot about that government. No doubt, but no doubt there are complaints. But overall the performance is good. And say with regard to corruption. Yeah. If you take that into account, no doubt in BJP there is corruption, but it is to a lesser extent. Have you been happy with the growth of Bengaluru? Obviously, yeah. We are very much happy actually. Okay. Since almost 18 years I'm in Bangalore, and I have seen it how it has grown so nicely. It has extended the boundaries, and really the culture-wise also. I feel that because of being cosmopolitan city, it's really awesome being here. The 75% BJP and other is Congress and Janata, 75% BJP. Would you like to add something? Regarding the election, I prefer BJP. What is your report card for the government? Government will give full support for the BJP. They are facing a lot of criticism that they have not solved the issues of Bengaluru. Yeah, it will take time. Bangalore is not a small city, so it will take time. We have to give the time for any government to solve any problem. So we'll see further where they will do. Okay, but can I ask you, the Congress is fighting these elections very strongly. They have also given some guarantees for the poor and the middle class. What basis they are giving, we don't know. Free of cost, anything, it's not good. You don't believe that this is the right strategy? No. Sir? We want BJP to come back. Why is that? Why is that? Because of everything every day we see what Mr. Modi or Mr. Bommai has done for Karnataka. Okay. I think we never expected that BJP is going to work such a way so that everyone will be happy. I don't know why these Congress people are that 40%. This is only 1% out of the entire contractor has come out. That too, whether it is genuine or not genuine, no one knows. Well, at least as far as this area and this place is concerned, in Bengaluru, it seems like there is reasonable support for the incumbent government, despite some of the headlines from Bengaluru and some of the charges of corruption and lack of infrastructure, which specifically for a city like Bengaluru are the big issues. It seems like the BJP has managed to at least convince some amount of people that they have the right intention to work, and whether it's going to be that intention that is going to be the clinching factor, we'll have to wait and see. And we continue to keep our focus on the poll-bound state of Karnataka. We have Chief Minister Basuraj Bommai, who spoke exclusively to CNN News 18's managing editor Zaka Jacob on the flashpoint of Bajrang Dal ban. And can the Congress party really defend making an announcement of this nature? Listen in. So tell me, this promise made by the Congress yesterday to ban the Bajrang Dal, they are saying it's a extremist organization, it is a militant organization. Why is the BJP and your extended other organizations making this such a big issue in the election campaign? See, Congress also knows very well Bajrang is not an extreme organization or a militant one. The issue is they try to satisfy the minorities, PFI and SDPI.
in the real hurry to satisfy them, they have shown Bajrang Dal along with them. You can't weigh a nationalist thinking organization with the anti-national organization. See, PFI has been proved again and again. There are a lot of cases and a lot of people have been put behind bond for last so many years. That has been very clearly established. Whereas in Bajrang Dal, there is not even a single case of that sort. So it is very, very blatantly Congress has tried to lie to appease the minorities, and that's how there is a very big reaction against them. People can see through the game of Congress. But they have today put out a list of cases that were filed against Bajrang Dal activists, even by your government, even in the last couple of years. How do you... The nature of cases of Bajrang Dal and nature of cases of PFI and which sections are, they are totally different. Most of the PFI cases have been handling by NIA. What it means? NIA means international connections are there, terror connections are there. Show me one in Bajrang Dal. So, to ban an organization, there is a rules, and state government doesn't have a powers to ban. Bajrang Dal is in so many states. It's only the center has to do. So, Congress can never dream near anywhere to come to power. So, it's just a poll gimmick to appease minorities. It is very well established. Well, that's the word coming in from Chief Minister Basuraj Bommai, who continues to point out that this entire issue about Bajrang Dal being banned and the equivalences that have been raised with the PFI are completely wrong. You have heard the likes of Acharya Pramod from the Congress party as well saying that Bajrang Dal may be a notorious organization but not a terror one. And this is exactly something that the BJP has been insisting, that Bajrang Dal is a cultural organization and it cannot be equated to an organization like PFI which had terror links. This entire issue continues to dominate this last leg of campaigning which is going on. We have had the Prime Minister who has spoken about this issue. We also heard the top leaders of the BJP who are campaigning in the state talking on this particular issue, and now you have the Chief Minister. Our Managing Editor Zaka Jacob joining us on the broadcast. Zaka, this particular issue continues to dominate the political discourse in the last leg. Absolutely, and the BJP wants to make sure that this issue is kept alive because they feel like this is an issue that the Congress has given to them on a platter. Remember, this election so far, at least up until the last week or 10 days, it was always perceived that the Congress had an edge. But now, because of these couple of things that have happened, one, the personal attack on Mr. Modi, comparing him to a poisonous snake, and then subsequently now this proposed ban on the Bajrang Dal, I think the BJP is keeping this issue alive in a way that it sort of rallies its cadre and the extended Sangh Parivar affiliates. Mr. Bommai, the Chief Minister, speaking for the first time on this issue after this proposed ban, saying that he thinks that the Congress knows that this is an unimplementable plan because he says that the Bajrang Dal is not an organization that's present only in one state. If you want to ban an organization that operates across India, you have to be able to have multiple state governments to ban it. And how can you ban an organization such as the Bajrang Dal when the BJP is in power in 17 states and at the center? He drew the comparison between the Bajrang Dal and the PFI. The PFI ban went through because the BJP is in power at the center, and it's the central government that moved to ban the PFI. His contention was that not only was the Congress ill-informed, but this was just an illustration, according to him, of the Congress trying to appease a certain vote bank. And of course, he also added, in good measure, the PFI and the SDPI. But I think for the BJP, this issue has come certainly as some kind of a godsend because it helps them rally the cadre. Let's make very, very clear distinction about this. Most ordinary voters may not necessarily care that much about the Bajrang Dal issue, but for the BJP voters and the BJP cadre, I think this has been a sort of a rallying point for them in a way that that mobilizes them to turn up at the voting booth on May the 10th. There was an interesting point, Zaka, that Pallavi was mentioning just a few seconds ago when we were discussing this entire issue, that there are also floating voters each time there's an election, especially the last leg of campaigning, and polarizing issues like this is exactly something Congress party needed to avoid, but they have perhaps handed an issue to the BJP on a platter. Oh, absolutely. The floating voters, they make up for anywhere between 4 to 10%, but they are a critical factor because there are floating voters in every constituency.
and particularly in constituencies where the margins are very low. For example, in the 2018 election, I believe there were about over 60 constituencies where the margin of victory was less than 5,000 votes. In that event, in those constituencies where the margins are very low, it's these floating voters who can make a difference. And for them, at least for some of them, this issue, these emotional issues, these issues which are playing on sentiment and faith and things like that, could potentially be a vote swinging issue. Now, let's be very clear. Most voters are concerned about their daily bread and butter and livelihood issues, whether it is, whether their lives have improved in the last 5 years, if they got better schools, hospitals, etc. But there could be, 1 or 2% voters for whom these emotional issues matter a lot. And the BJP is hoping that 1% swing vote, even if that 1% goes away from the Congress and stays with the BJP, that could potentially be the margin between, sitting in the opposition and being able to come to power. Zako Jacob getting us all the details. Sanket Yanagi of the Congress Party is also joining us on the broadcast. Sanket, good afternoon. Thank you so much for speaking with us. Is this a self-goal by the Congress Party? It is absolutely not, number one. And I have a few questions to Mr. Bommai and also to the BJP through your media. First of all, whether they want peace and harmony in the society or not, number one. Number two, whether they would give preference to the law and order in the state or not, number two. Number three, whether development is their agenda or the communal agenda they have, number three. Number four, whether the organization, whether it is a PFI or any other organization, if they are very genuine and patriotic, not creating any hurdle in the law and order or peace and harmony, why should they be rattled? And why BJP is so rattled? Let Mr. Bommai or Mr. Modi or Mr. Amit Shah answer these questions. Mr. Yanagi, I want to stay on you've raised multiple issues. We'll try and get a BJP spokesperson who can respond to it. But I want to stay on this particular issue. Some time ago, we also played out a reaction coming in from Acharya Pramod. And he said, look, we are winning this election. It's going very well for the Congress party. Acharya Pramod is on record to say to the media, he has put this out in the public domain, that there was no need for the Congress party to raise all these issues, the Bajrang Dal issue. The argument which is coming in from the BJP, and frankly I find it plausible, that this may be a notorious organization known for moral policing or some kind of problems. A lot of cases against Bajrang Dal in fact have been filed by the BJP government and they are being pursued in a court of law. But that doesn't make them a terror organization. There is a huge distinction between a certain cultural group indulging into, extrajudicial activities or extrajudicial violence. But it's another thing to say that it's a terror organization and compare it to a PFI. Why does the Congress party have any kind of sympathy for the PFI is what the BJP is asking you. So in our agenda and manifesto which we have said is, the organizations which are involved in antisocial activities or disruption of peace or unconstitutional activities. We have not declared any organization as terror organization and they are calling themselves as the terror organization now. If they consider themselves as the terror organizations, then that is their problem. Why should they be rattled? That's a simple question. We have not named any, because to declare any organization as a terror organization or not, the power vests with the central government. How can a political party can declare an organization as a terror organization the way BJP used to do it earlier? That we can't do. We will not directly jump the gun like the BJP. And they are considering themselves as their terror organization, and it is the creation of the BJP, that a particular organization being called as a terror organization or otherwise. BJP is now politically you're arguing that you've not. So you're basically arguing that you've not particularly named the Bajrang Dal. Is that what you're saying? We have been very much clearly saying agenda is very clear. Yes. Development. Whoever is coming in the way of I want to bring in Malvika Avinash also into the discussion. Malvika ji, why give so much importance to Bajrang Dal? They are not the sole decisive issue in this election. Development issues should take the center stage. The Congress party says that you wanted an opportunity to polarize. That's exactly what you're doing right now. Malvika ji. Is it the BJP which found an equivalent in Bajrang Dal to PFI? Is it the BJP which is behaving like a terror apologist? It is the Congress party. Why are they behaving like terror apologists? Why are they so apologetic about what PFI does? Why did Mr. Siddaramaiah set free 1,500 of the PFI activists in 2015? Do they have any answers for any of those?
Why did 22 members of the BJP and RSS get killed when Siddaramaiah was in power in Karnataka? Didn't they know that PFI indulges in anti-national as well as terror activity? Why are they behaving like terror apologists? And how dare they compare Bajrang Dal, which is a social organization, and call it an equivalent to PFI? And they have named Bajrang Dal in the manifesto. Exactly, that's what I was asking. The spokesperson can sit here and lie for all his might, but it's there in the manifesto. Sanketji, you've named Bajrang Dal in that manifesto, and I double-checked with you, that's why. That are you saying you've not named? Because we've gone through that manifesto, Bajrang Dal is named there. It is not our case that we have not named Bajrang Dal, but we have been saying clearly, we have not called Bajrang Dal a terrorist organization. Yeah, but when you talk about banning it, sir, you're calling it a terror organization. There are only terror organizations in this country which are banned, right? Not necessary. Any activity or any organization which is involved in the environment, which is disrupting the peace and order, that is called as also an organization which could be banned. What is wrong in this? And let me read that sentence for you for the convenience of your viewers. What we have said is, the Congress party is committed to take firm and decisive action against individuals and organizations spreading hatred amongst communities on the grounds of caste or religion. We believe that the law and constitution is sacrosanct and cannot be violated by individuals and organizations like Bajrang Dal, PFI, so you have named Bajrang Dal. Or others. Please mark this. All right, Mr. Sanket Yanagi and Malvika ji, thank you so much for joining us on the broadcast. This debate is far from over and clearly is setting the tone and tenor in the last leg of campaigning in the poll-bound state of Karnataka. That story and much more on the other side of a quick break. Stay tuned. Many of them were between their week offs or on layovers. They, in fact, have also now been stranded, some within the country, some overseas. They've been trying to contact the airline, but no response has come. Now, remember, Go First now becomes the first airline after Jet and Kingfisher that is filed for bankruptcy. Ridhima, how is this expected to impact the flyers? Of course, it's been said that no flights for the next 3 days. But, considering they filed for bankruptcy, I don't think there is going to be any relief for the airline or for flyers after that as well. Just a small correction, Shilpa, they've actually announced cancellation of operations only for 2 days. But technically, because they've filed for bankruptcy, we do know that it's almost unlikely that the operations will be back. But as per the official announcement, they've said that they will not be operating flights for the 3rd and 4th of May. What is also interesting is the official statement by Go Air is saying that there are technical operations. They're not saying that they don't have any future plan as far as the operation of the airline is concerned. But as you rightly pointed out, this is going to be a mess for the passengers. It is highly problematic because an airline like Go First actually does not have an arrangement of alternatives with other airlines. So when they cancel a ticket for the passenger, they actually are not rebooking them on another airline. They're saying refunds will come, but we don't know when those refunds will come. So essentially, if you were a passenger who was supposed to fly on Go First between the 3rd and the 4th of May, you're now stranded. You will have to shell out a lot more till the time your refund actually comes back. Ridhima, also, what's the word coming in from the government, the aviation ministry? We had a reaction that came in from the civil aviation minister yesterday who called it extremely unfortunate. Now, many are also questioning that possibly could we have seen a more proactive response from the government? Could we have seen the government step in earlier? Because as we've been reporting since yesterday, Shilpa, that the cash flow crunch for Go First is actually not a new issue. They have been defaulting on payments as far as their results are concerned. So possibly this could have been a situation that they could have tackled earlier. But as of now, the government has said that they will try and find a solution. But this also now raises a further question. Look at what's happening parallelly. You have Jet Airways, which is as good as zero now because you've had all the top executives who've quit the airline. So we don't know whether Jet also will fly again or not. We've seen what's happened with Kingfisher and now Go First also going down the drain. Ridhima, if you can do some number crunching for us and take us through the amount of dues that is owed by the airline and what sort of relief any possible arbitration can bring about.
Well, the companies actually refuse to indulge in those numbers. The kind of numbers that we're picking up by the means of sources are these. We're understanding that because there were about 25 of the A320neos, which means about 50% of the fleet as far as Go First is concerned, that is grounded because of faulty engines by Pratt & Whitney. The airline sources are telling us that about 10,800 crore revenue loss is what the airline is working with. Now, we don't have exact numbers in terms of what are the other kind of visa payments, creditor payments that have been made by the airline, which has further resulted in these losses. But Shilpa, you would remember this and our viewers would remember this. This is a very unfortunate pattern that has come into play, and we've seen this play out in previous cases as well. The minute you have 50% or more than 50% of your fleet being grounded in a country like India, the revival plans are as good as zero. And that's why when yesterday Go First announced that they will be filing for voluntary insolvency or bankruptcy, the question on its future is the biggest question that is being discussed by experts today. Owned by the Wadia Group, they've suspended flights for today, tomorrow and day after owing to a severe fund crunch. And Go First has also filed for bankruptcy. The airline has pending dues of oil marketing companies and more than half of its fleet has been grounded. The DGCA has issued a show cause notice to the airline after they cancelled fresh bookings, stating that no prior intimation had been given for the same, thereby violating provisions already laid out. Now the airline has to respond within 24 hours as to why action should not be taken against them. Go First has blamed Pratt & Whitney for its insolvency, saying that they supplied an increasing number of failing engines. And they are saying कि अभी flight cancel है, no prior information, nothing. ऐसे अगर होगा ना ही उनके कुछ कोलैब्स हैं कि अगर मेरी आने वाली फ़्लाइट इंडिगो से है तो एटलीस्ट दे मस्ट हैव क्लियर दिस थिंग कि आप कुछ सपोर्ट होना चाहिए. सपोर्ट सिस्टम के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो सपोर्ट होना चाहिए कि आप इसको दूसरी एयरलाइन से हम आपको अरेंज करा रहे हैं सो दैट आपका इनकन्वीनियंस ना हो, आपका जो कंफर्ट जोन है वो ख़राब ना हो. जो जिससे हमने जो टिकट का वो कर रखा है, पेमेंट दे रखा है जिसका 4,500, वो भी हमें वापस नहीं दे रहे हैं ना. वो हमें 7 डेज में देंगे. तो फिर अभी अगर वो देते तो समझ में आता, हम कर भी लेते, बट अभी तो वो भी नहीं दे रहे. वो भी 7 डेज में देंगे और जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी 7 डेज में देंगे. तो कोई कैसे जाएगा? बहुत गलत, बहुत बुरी है. ना रिस्पांस बरोबर है, ना बात कर रहे हैं बरोबर उन लोग, ना कोई काउंटर में बरोबर रिस्पांस है उसका, और ना ही कोई पेमेंट का ऐसे बोल रहे हैं क्यों ना. My colleague Ridhima Bhatnagar is joining us with more. Very good morning to you, Ridhima. Ridhima, before the rest took them to the NCLT, the CEOs confirmed that they filed for insolvency proceedings. But perhaps an arbitration could have bailed them out of... All right, continuing our focus on the poll-bound state of Karnataka, Bajrang Dal is all set to conduct Hanuman Chalisa recital programs across Karnataka to counter the Congress party's manifesto. On the expected lines, not just the BJP but even the Bajrang Dal has taken the opposition to the kind of words that were used in the Congress party manifesto against them to another level. I'll try and connect to my colleague Harish and get more details and perspective on this entire story. But this is, in line with the multiple protests that Bajrang Dal and their activists have been organizing at different places, saying that they're a cultural, social organization and they should not be equated to a banned terror outfit like the PFI. Harish with us on the broadcast. Harish, Bajrang Dal all set to, organize these Hanuman Chalisa recitals across the state. On the expected lines, they are taking the opposition to a notch up. Absolutely. The BJP and the whole right-wing ecosystem sensing opportunity here. Remember now, this gives the BJP a larger cause, which is the Hindutva cause, a larger enemy, which is the Congress and Siddaramaiah. And they understand that they need to keep this momentum going, they need to keep this issue alive, and that has to happen till the 10th of this month. And to create buzz, you have all these groups now hitting the streets, protesting, having Hanuman Chalisa being recited at multiple places across the state. That's the plan. You have the Chief Minister who's spoken to CNN News 18 exclusively just a while ago, saying that how can the Congress in a way compare a nationalistic organization to an organization that's banned, that has been probed by the NIA in several cases. It has terror charges, and this, the BJP says, is the anti-Hindu stance of the Congress party. The Congress party itself is divided now. You look at Mallikarjun Kharge's statement
he's not very clear on his thoughts about this issue. He's been evasive. He's saying that the state leaders would respond to it. D.K. Shivkumar justifying this, saying that yes, they have indulged in Moral Policing Act and similar other such crimes, propagating hate against different communities, and that's why we have taken this stance. So the Congress party itself slightly divided on what stance they need to take and the impact that this will have. The BJP sees a momentum here. They also understand that it in a way will give some bit of enthusiasm to their cadres. They will hit the street. They have a cause now. Earlier, remember, it was 40% Sarkar and the verbal battle between the Congress and the BJP on whether it's true or not. Now there is a cause that's closer to their heart and they understand it could give them momentum. They'd want to build that momentum and a cause which is closer to their heart and something which they can always use for their own advantage. We'll continue tracking the pulse of the state of Karnataka in the run-up to the crucial elections in the state. That's all on this edition of CNN News 18. My colleague Reha takes the news forward. Thank you so much for that, and thank you so much for staying with CNN News 18. I'm Reha Siddiqui, and over the next 60 minutes, I'll be bringing you all the top headlines that have been dominating as the country progresses and talks about the Karnataka elections also. So that's our top story, that top focus at the top of 4. After the release of Congress's manifesto, Prime Minister Narendra Modi has gone on to lash out at the Grand Old Party in Karnataka over a number of topics. The Prime Minister slammed the appeasement politics that he claims is being done by the Congress party and also hit out at the Congress, saying that they are pleading for votes in order to go ahead and get their retiring leaders to win in Karnataka. He's also stated that when voters in fact press the button to vote, they should think of Bajrang Dal, Bajrang Bali and then cast their vote. So he has in fact taken on the Grand Old Party over the claims that it has made in its manifesto that it is going to go ahead and ban outfits like Bajrang Dal, and he's equated with the Bajrang Dal outfit to Lord Hanuman, and he has reiterated that very point that it is what the voters need to have in mind while they are going to cast their ballot. Now this comes in as various units of the Bajrang Dal have staged protests in response to the Congress's manifesto. Now Congress chief Mallikarjun Kharge has lashed out at the BJP, saying that the party pushes politics of polarization, and that's something that's it's been seen doing yet again. Bajrang Bali ki, Bajrang Bali ki, Bajrang Bali ki. वो कहती हैं कि हमारा एक नेता रिटायर्ड होने वाला है, अब वो जा रहा है, जाते जाते एक दे दो। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। आज पूरी दुनिया भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को देखकर उसे सम्मान दे रही है, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಓಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
Karnataka Chief Minister Mr. Basavaraj Bommai has spoken exclusively to CNN News 18's managing editor Mr. Zaka Jacob on the flashpoint over the Bajrang Dal ban that has been promised in the Congress party's manifesto. Let's take a look. So tell me, this promise made by the Congress yesterday to ban the Bajrang Dal, they are saying it's a extremist organization, it is a militant organization. Why is the BJP and your extended other organizations making this such a big issue in the election campaign? See, Congress also knows very well Bajrang is not an extreme organization or a militant one. The issue is they try to satisfy the minorities, PFI and SDPI. In the real hurry to satisfy them, they have shown Bajrang Dal along with them. You can't weigh a nationalist thinking organization with the anti-national organization. See, PFI has been proved again and again. There are a lot of cases and a lot of people have been put behind bars for last so many years. That has been very clearly established. Whereas in Bajrang Dal, there is not even a single case of that sort. So it is very, very blatantly Congress has tried to lie to appease the minorities, and that's how there is a very big reaction against them. People can see through the game of Congress. But they have today put out a list of cases that were filed against Bajrang Dal activists, even by your government, even in the last couple of years. How do you... The nature of cases of Bajrang Dal and nature of cases of PFI and which sections are, they are totally different. Most of the PFI cases have been handling by NIA. What it means? NIA means international connections are there, terror connections are there. Show me one in Bajrang Dal. So, to ban an organization, there is a rules, and state government doesn't have a powers to ban. Bajrang Dal is in so many states. It's only the center has to do. So, Congress can never dream near anywhere to come to power. So, it's just a poll gimmick to appease minorities. It is very well established. My colleague Harish Upadhyay now joins us on the broadcast. Harish, what started with the release of the Congress's manifesto, from what the Congress party would have wanted, talking about people's issue, that has completely been derailed, and now the entire flashpoint is over this Bajrang Dal ban that the Congress party has promised to actually bring in if it comes into power. Do you think it's derailed the party's perspectives, considering what was being fought on real issues is somehow, just been, let aside, and this is all that everybody is talking about? It's definitely given the momentum away from the Congress to the BJP. The BJP is now setting the narrative. The Congress is responding to that. And it's happened because of the Congress's manifesto. The Congress party, within the Congress party, there is now a division. Certain people who think that it's wrong to engage on this issue now, and the party should just move away from this and try and ensure that the narrative is pulled back. While you still have leaders like D.K. Shivkumar justifying this, saying that the Bajrang Dal is an organization that has indulged in moral policing and also has indulged in activity that spreads hate among multiple communities, and justifying this move. And you've had Mallikarjun Kharge, who did not want to comment on it, who was very evasive. So the Congress party is divided. There's not much of a time left now. Remember, it's already 3rd May. 10th May is when you have elections. The campaigning will come to an end very soon. So can the Congress party pull the narrative back in their favor in the next 4-5 days is the question. The BJP and the whole right-wing ecosystem not letting it happen. They're calling for protests. They're having Hanuman Chalisa being recited at multiple places, because the BJP understands that it would be comfortable for the BJP to fight the election on this narrative, and the Prime Minister and Amit Shah also referring to that, and the whole system of the BJP, the whole might of the BJP now ensuring that the discussion is around this aspect of the Congress manifesto, and there's no diversion away from this. And adding to the fact that over the last few days we've had comments against the Prime Minister by Mallikarjun Kharge and Priyank Kharge, it's now nearly a week of
time where the BJP has set the narrative and the Congress has been responding to that. And that wasn't the case over the last 2 months or so when the Congress ensured that the discussion, the debate was around the 40% sarkar, around the government failure, around the infrastructure crumbling in Bengaluru and other cities. All right. Harish, I'd please request you to hold on. We have some other reactions that we are playing out for our viewers on this very story. देखो, कांग्रेस ने तो भगवान राम के प्रति भी वही रुख रखा और बजरंग बली के खिलाफ भी वही रुख रखा। कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते चलते वो इस गिरावट तक आ गई है कि वोट बैंक के लिए कभी ये भी कह देते थे कि भगवान राम तो काल्पनिक, दुनिया की कोई ताकत ना बजरंग बली को रोक पाई है ना उनके भक्तों को रोक पाएगी। दूसरा मैं कहूँ, उनकी भाषा कांग्रेस की, मोदी जी को मौत का सौदागर कह देना, नीच कह देना, कांग्रेस की मानसिकता क्या है, हताशा निराशा क्या है और कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है, और इसका जवाब हर चुनाव में जनता ने दिया है। ನಾವು ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತವರು ನಾವು ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಕದಲಬಾರದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಜರಂಗ್ ದಳ್ಗೂ ಹನುಮಂತಂಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹನುಮಂತನೇ ಬೇರೆ, ಬಜರಂಗ್ ದಳನೇ ಬೇರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಏನು ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಅಂತ. ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ. ನಾವೇನ ಬಹಳ ಪ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कारಗಳು. भगवान बसवेश्वर के सामाजिक न्याय और वीर वीरांगनाओं के शौर्य से प्रेरित करने वाली इस वीर भूमि को, पवित्र भूमि को मैं वंदन करता हूं. कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आपका उत्साह, उमंग अद्भुत है. आपका जोश अभूतपूर्व है. मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया और कार्यक्रमों में जरा देरी हो गई और लोगों का उत्साह इतना है कि जरा जल्दी निकल भी नहीं पाते हैं. मैं फिर से एक बार आप सबकी क्षमा मांगते हुए, भाइयों बहनों, मैंने कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन में कई स्थानों पर जाने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि इस बार कर्नाटका ने पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की स्थिर सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है. चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, शहर हो, गांव हो, चारों तरफ
उत्साह, उमंग, जोश और एक ही नारा, एक ही मंत्र, एक ही आवाज सुनाई देती है, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। सहोदर सहोदरियरे, अब कर्नाटका में वोटिंग के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा है। अगले बुधवार को तो आप कर्नाटक का भविष्य तय कर लेंगे। कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार की वापसी का शंखनाद कर चुकी है। कर्नाटका की जनता इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत देने का निर्णय कर चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण है गरीब का विश्वास, मध्यम वर्ग का विश्वास, नौजवानों का, महिलाओं का विश्वास, जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़े, हमारे आदिवासी साथी, उनका पहली बार किसी पार्टी पर इतना विश्वास हुआ है। कर्नाटका के करीब करीब हर परिवार को डबल इंजन सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। जिन तक कभी सरकारी मदद पहुंचती तक नहीं थी, उनको भी पहली बार मदद मिल रही है। बंधु भगिनीयरे, बीजेपी पर विश्वास का एक और बड़ा कारण है कर्नाटका के हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ अभूतपूर्व काम, तेज गति से हुआ काम। जहां कभी रेल और रोड तक बदहाल स्थिति में थी, वहां अब एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। बीजेपी के पास कर्नाटका को देश का नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए भविष्य का रोड मैप है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कर्नाटका नंबर 1 बनना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, क्या कर्नाटका नंबर 1 बनना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटका नंबर 1 हो, ये आप चाहते हैं? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? घर घर जाकर के लोगों में विश्वास पहुंचाइए कि बीजेपी को वोट मतलब कर्नाटका का नंबर 1 बनना तय। स्नेहितरे, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की शॉर्टकट गवर्नेंस से बहुत सावधान रहना है। जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ टाल देने की मंशा हो, तो वो कांग्रेस की तरह ही काम होता है। इसी शॉर्टकट गवर्नेंस इसने देश में वोट बैंक की खराब राजनीति को जन्म दिया है। जब कोई शॉर्टकट पॉलिटिक्स करता है तो कांग्रेस की तरह सबसे पहले यही सोचता है कि समाज को बांट दो, समाज के टुकड़े टुकड़े कर दो
एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, गांव वालों को शहर से लड़ाओ, अगड़ों को पिछड़े से लड़ाओ, पंथ के नाम पर बांटना, संप्रदायवाद का जुनून फैलाना। भाइयों बहनों, ये विकास का रास्ता नहीं हो सकता है, इससे विकास नहीं होता है। ऐसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स से कांग्रेस को, जेडीएस को थोड़ा बहुत लाभ पहले हुआ होगा, लेकिन ये 21वीं सदी है। जो नौजवान 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो नौजवान अपने भविष्य को शॉर्टकट वालों के हाथ छोड़ करके कट शॉर्ट होना नहीं चाहता है। इसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स की वजह से आजादी के इतने वर्षों बाद भी हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों भारतीयों के सिर पर पक्की छत नहीं, करोड़ों लोगों के पास बैंक खाते नहीं, लाखों घरों में नल से जल की सुविधा नहीं। सहोदरा सहोदरी रे, शॉर्टकट गवर्नेंस की वजह से विकास में भी अपना पराया, मेरा तेरा, इस जाति का उस जाति का भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं होता है, और फिर बीच में से मलाई खा लेने की। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के विजन से शॉर्टकट गवर्नेंस की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी योजना होगी वो सबके लिए होगी, सबको उनका लाभ मिलेगा। शॉर्टकट गवर्नेंस की प्रैक्टिस करने वालों को भी कभी रीजनल इम्बैलेंस की भी परवाह नहीं थी। एक ही राज्य का एक हिस्सा बहुत विकसित होता था, जबकि दूसरा हिस्सा पिछड़ा रह जाता था। और ये हमने कर्नाटका में भी देखा। इस समस्या के समाधान के लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला योजना लेकर आए। इतना ही नहीं, हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पर भी काम कर रहे हैं। अब बीजेपी कर्नाटका भी संतुलित विकास पर बल दे रही है। बंधु भगिनी रहे, आज मैं कर्नाटका के लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, एकजुटता ही कर्नाटका के विकास का सबसे बड़ा सूत्र है। आज कर्नाटका के खिलाफ जिस तरह की साजिशें हो रही है, आज जिस तरह कर्नाटका की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह कांग्रेस ने तुष्टीकरण को अपने सबसे बड़ा आधार बना दिया है, कर्नाटका के लोगों को इससे बहुत सतर्क रहना है। आप लोगों की एकजुटता ही कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों को परास्त करेगी। स्नेहितरे, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बहुत आवश्यक है। बीजेपी के संस्कार आपके सेवक की तरह काम करने के हैं। मैं भी कर्नाटका के लोगों के सेवक की तरह काम कर रहा हूं, लेकिन कर्नाटक की जनता देख रही है कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही,
दिल्ली के उनके शाही परिवार के प्रति है। दिल्ली में बैठा शाही परिवार अपने रिमोट से यहां के नेताओं को कंट्रोल करके रखता है। और जेडीएस तो है ही एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जेडीएस की जवाबदेही उसके मालिक परिवार के प्रति ही है, लेकिन मोदी के लिए, बीजेपी के लिए तो कर्नाटका का हर परिवार ही अपना परिवार है। आप ही मेरे परिवारजन है। आपका सुख, आपका दुख, ये मेरा परिवार है। हमारी जवाबदेही आपके प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति है। सहोदर सहोदरियों रे, कांग्रेस और जेडीएस में एक परिवार की पार्टी होने के अलावा एक और समानता भी है। उन्हें हर जगह नकार दिया गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें अब देश के सिर्फ 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में। इसी तरह 2018 में यहां जो चुनाव हुआ, जीतने वाले जेडीएस के करीब आधे विधायक सिर्फ 3 जिलों से ही आते हैं। और अब इन 3 राज्यों और 3 जिलों के लोगों ने भी इन दोनों पार्टियों से मुक्ति पाने का मन बना लिया है। लोग ये समझ चुके हैं कि डूबते हुए जहाज कर्नाटका का, इन क्षेत्रों का, दूर दराज के इलाकों का, आदिवासी विस्तारों का, कोस्टलाइन का, गरीब का, नौजवानों का, किसान का भविष्य बना नहीं सकते। जो खुद का भविष्य नहीं बना सकते, वो आपका भविष्य क्या बनाएंगे? बंधु भगिनियों रे, बीजेपी को कैसे कर्नाटका के हर परिवार की चिंता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ भाषण नहीं है। हमारे एक एक निर्णय को तलाश करके देख लीजिए, तराजू में तौल करके देख लीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, आपके भलाई के लिए काम करते हैं। देश में कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक रही है। सरकारी सेवाओं के अधिकतर एग्जाम याद करिए, सरकारी सेवाओं के एग्जाम्स या तो हिंदी में होते थे या अंग्रेजी में होते थे। गांव में गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों का बेटा बेटी जो कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा है, जो मराठी मीडियम में पढ़ा है, उसके लिए तो ये बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस जेडीएस ने कभी इस चुनौती का समाधान नहीं किया। आपने बीजेपी सरकार बनाई तो आपको परिणाम मिला। आज मेडिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई से लेकर केंद्रीय बलों में भर्ती की परीक्षाएं भी स्थानीय भाषाओं में होना शुरू हुआ है। चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, कन्नड़ा हो, इसका विकल्प आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है। क्यों? हम आपके लिए जीते हैं, हम आपके लिए सोचते हैं, हम आपके बच्चों के लिए सोचते हैं। स्नेहित रे, जिसके लिए अपने परिवार का गौरवगान ही एकमात्र एजेंडा हो, वो सामान्य परिवारों के बलिदानों
उनके दुख सुख की चिंता नहीं कर सकता। इसलिए वो वीर सावरकर को बार बार गाली देते हैं। आए दिन स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जी को उनके विरुद्ध झूठ फैलाते हैं। बाबा साहब आंबेडकर जब जीवित थे तब डगर डगर उनका अपमान किया। बार बार जहां मौका मिला बाबा साहब आंबेडकर जी को अपमानित किया। इतना ही नहीं, हमारे कर्नाटका के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पाटिल जी हो, एस निजलिंगप्पा जी हो, उनको भी इसी मानसिकता से अपमानित किया गया। सहोदर सहोदरियों रे, कित्तूर कर्नाटका ने तो देश को नारी शक्ति का सामर्थ्य दिखाया है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का शौर्य हम सब जानते हैं। जब तक देश में कांग्रेस थी तब तक भारत की सेना, नेवी, एयरफोर्स में बेटियों की एंट्री या तो बंद थी या बहुत ही सीमित भूमिका थी। आज हमारी सरकार ने सेनाओं में हमारी बेटियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। सैनिक स्कूलों और मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों को भी बेटियों के लिए खोल दिया गया है। और अब तो बेलगावी में सांगोली रायन्ना सैनिक स्कूल भी बनकर तैयार हो चुका है। बंधु भगिनी रहे, जब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना हो, जब जनता का विश्वास ना हो, तब झूठ बोलना कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। यहां जो मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको मैं जरा पुरानी कुछ चीजें याद करना चाहता हूं। उनके लिए सारी बातें नहीं होगी। उनको पता चलेगा कि आपके माता पिता को कैसी मुसीबतों से गुजरना पड़ा इनके कारण। आपके माता पिता को जो मुसीबतों से गुजरना पड़ा, मेरे नौजवानों, आपको वैसी जिंदगी जीनी न पड़े, इसलिए मोदी अपने आप को खपा रहा है। अब देखिए क्या हुआ था 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में कांग्रेस ने देश को गारंटी दी थी कि वो 3 वर्षों में देश भर के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ेगी। इस गारंटी का क्या हुआ? 3 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान को ब्रॉडबैंड गारंटी दी थी उन्होंने। ये जो गारंटी के भाषण झाड़ रहे हैं ना, उनकी बात बताता हूं मैं। 3 वर्षों में कांग्रेस ने सिर्फ, आप चौंक जाएंगे, सिर्फ 100 से भी कम ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचा पाई। ये इनकी गारंटी। ये अपनी गारंटी पर ऐसे ही काम करने के आदी है। बोलना बहुत कुछ, करना कुछ नहीं। स्नेहितरे, बीजेपी संकल्प लेकर सिद्धि में जुड़ जाती है। आज देश के उन्होंने 100 से भी कम गांव किए थे। हमने आकर के 2 लाख से अधिक गांवों, पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचा चुके हैं। अब मुझे बताइए मेरे नौजवानों, ये 100 गांवों तक पहुंचने वाले चाहिए कि 2 लाख गांवों तक पहुंचने वाले चाहिए? आपको 2 लाख वाले चाहिए ना? 2 लाख गांवों तक काम करने वाले चाहिए ना? ये 100 गांव में जाने वाले लोग
अब कर्नाटका का क्या भला करेंगे भाई? ये थके हारे लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। यही नहीं, आज डिजिटल इंडिया की जो ताकत बनी है, उसका मुकाबला करने में दुनिया के विकसित से विकसित देश भी आज भारत से बहुत पीछे रह गए हैं। आज गांव-गांव में सरकारी योजनाएं फोन पर ही उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया से हम हर सुविधा आपके दरवाजे, आपके फोन पर लाए हैं। डिजिटल इंडिया से खेती करना भी आसान हो रहा है और गांवों में घर बैठे बैठे बेहतर पढ़ाई की सुविधा भी संभव हुई है। गारंटी के नाम पर धोखा दिया कांग्रेस ने और काम किया, आकर के दो गारंटी वो दे के गए। काम किसने किया? बीजेपी ने आकर के काम किया। भाई और बहनों, ऐसी दूसरी गारंटी की जरा मैं बात करता हूं। कांग्रेस ने 2004 में, आज से करीब करीब 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, 2004 में बिजली को लेकर के उन्होंने ऐसी गारंटी दी थी। कांग्रेस ने कहा था कि 3-4 साल में देश के हर घर को बिजली देंगे। लेकिन 2014 में, यानी 10 वर्ष बाद भी, जब मैं दिल्ली में आपने मुझे पहुंचाया तो मैंने देखा 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी। अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर परिवार अधिकतर SC, ST, OBC समाज के लोगों के थे। बीजेपी सरकार ने सौभाग्य योजना का संकल्प लिया और बहुत कम समय के भीतर देश के हर परिवार को बिजली कनेक्शन दे दिया। दोस्तों, बेलगावी जिले के भी करीब 40,000 परिवारों को भी इसका लाभ मिला। आपको भी आश्चर्य होगा, ये बेलगावी जिले में 40,000 परिवार ऐसे थे 2014 के पहले इनके पास बिजली नहीं थी। दोस्तों, ये मोदी ने आकर के काम किया है। स्नेहितरे, हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल देते हैं। आप याद कीजिए, रेल कनेक्टिविटी के अभाव में यहां कितना लंबा रूट आपको लेना पड़ता है। सालों साल से जो आपकी डिमांड रही है, उसे अब डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। मैं कुछ दिन पहले बेलगावी आया था तो अनेक रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया था। बेलगावी में आधुनिक रेलवे स्टेशन बनने से सुविधा भी बढ़ी है और गर्व की अनुभूति भी हो रही है। आप आज देखिए, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म में से एक आज हुबली में बना है। जब ऐसी कनेक्टिविटी होती है तब खेती हो या उद्योग, सबको लाभ होता है। स्नेहितरे, कांग्रेस और जेडीएस की सरकारों ने किसानों की समस्याओं को भी हमेशा लटकाए रखा है। कांग्रेस के शासन में गन्ना किसानों का बकाया एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसके स्थायी समाधान पर भी काम किया। बीते 9 वर्षों में हमने गन्ने से इथेनॉल बनाने पर बहुत अधिक बल दिया। कांग्रेस के पास इसको लेकर ना तो सोच थी, ना ही इसके लिए सही नीयत थी। साल 2004 में कांग्रेस ने कहा कि पेट्रोल में 5% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, लेकिन 10 वर्षों में ये 3% से ज्यादा नहीं कर पाए। 5 का लक्ष्य रखा था, वो भी नहीं कर पाए। 3 पर आकर के उनका काम अटक गया। जबकि बीजेपी सरकार ने
आपने इस सेवक को काम दिया, 10% ब्लेंडिंग का टारगेट भी समय से पहला पूरा करके दिखाया। अब बीजेपी सरकार 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। सहोदर सहोदरियों, ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है गन्ना किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, गन्ना किसानों को समय पर पैसा मिलेगा, ज्यादा फसल होगी तो भी नुकसान नहीं होगा, कम फसल होगी तो भी नुकसान नहीं होगा। 2013-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण गन्ना कोऑपरेटिव्स पर बहुत अधिक दबाव आ गया था। इस वर्ष के बजट में इसके लिए भी हमने गन्ना कोऑपरेटिव्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। गन्ना किसानों को एफआरपी में भी डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है। पिछले 9 वर्षों में एफआरपी में हमने 900 रुपये प्रति मैट्रिक टन की बढ़ोतरी की है। इसमें कर्नाटका की बीजेपी सरकार 100 रुपये और जोड़ करके दे रही है। सहोदर सहोदरियों, जिन कामों को कांग्रेस ने छोटा समझकर उसकी तरफ देखा भी नहीं, बीजेपी सरकार ने उन्हीं कामों पर बल दिया। जैसे यहां कर्नाटका में अमृत स्वाभिमानी कुरुगाई योजना ने, उसकी बहुत चर्चा है। इसके तहत भेड़ बकरियों के लिए हमारे कुर्बा परिवारों की मदद की जा रही है। आज देश में पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का जो राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, उससे भी इन साथियों का लाभ हुआ। देश में पहली बार छोटे किसानों को सीधे बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है। बेलगावी के लाखों किसानों के बैंक खाते में लगभग 1300 करोड़ रुपए पहुंच चुके। एक जिले में 1300 करोड़ रुपए, और दिल्ली से 1 रुपया निकलता है ना, पूरे के पूरे 100 पैसे उसे खाते में जमा होते हैं। बीच में कोई पंजा हाथ नहीं मार सकता है। कार्मिक, श्रमिक, ऐसे हर वर्ग को पहली बार पेंशन और बीमा की सुविधा भी मिली है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो फुटपाथ पर दुकान लगा करके खड़े रहते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। इससे भी कर्नाटका के लाखों साथियों को मदद मिली। हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालिगा, शिल्पी, गारे, केल सदवा, बड़गी जैसे साथियों के लिए भी हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। बंधु भगिनी रहे, मुद्रा योजना ने तो देश में छोटे उद्यमों के रूप में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया है। कर्नाटका इसके सबसे बड़े लाभार्थी राज्यों में से एक है। यही बेलगावी जिले में हजारों लोगों को बिना बैंक गारंटी मुद्रा लोन दिए गए हैं। इनमें से अधिकतर मेरी माताओं बहनों ने लिए हैं, स्वरोजगार शुरू किए हैं। सहोदर सहोदरियों, गरीब कल्याण रोजगार, स्वरोजगार से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा ही काम कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगा। इसलिए अब कांग्रेस का रिवर्स गियर नहीं चाहिए, डबल इंजन की स्पीड ही चाहिए। और इसलिए घर घर एक बात पहुंचानी है, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। भाइयों बहनों, एक सप्ताह बाकी है।
घर घर जाएंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए। घर घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतने का काम करेंगे। एक एक पोलिंग बूथ जीतेगा, एक भी पोलिंग बूथ हारेंगे नहीं ना। हर पोलिंग बूथ हमारा चुनाव जीतने का बहुत बड़ा किला है। उस किले को जीतेंगे ना, पक्का जीतेंगे। हर परिवार में जाएंगे, मतदान करवाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? चुनाव में तो करेंगे, लेकिन मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा पर्सनल काम है, करेंगे। ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत जब बताओ तो मैं भरोसा लेके जाऊं। ये चुनाव का काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है। करोगे? अगर आप करने वाले हैं तो अपना मोबाइल निकालिए और अपने मोबाइल की जरा फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे बताइए। मैं देखता हूं कहां कहां लाइट हो रही है। सबकी लाइट जलनी चाहिए। वाह, शाबाश। हर एक की फ्लैश लाइट जले। मुझे बताइए, आप लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे? अच्छा, मैं एक काम बताता हूं, करोगे? करोगे? देखिए, घर घर जाकर के कहना कि मोदी जी बेलगावी आए थे। सुनिए, पहले सुनिए। अरे सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। घर घर जाकर के मेरा एक काम करना है। जाकर के कहिए, मोदी जी बेलगावी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, मोदी जी ने प्रणाम भेजा है। इतना कर दोगे? हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, मेरा नमस्कार पहुंचाओगे? जब इन सबको आप मेरा प्रणाम कहोगे ना, तो सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब सब लोग आशीर्वाद देते हैं तो मेरी ताकत काम करने के लिए और बढ़ जाती है। मैं थकता नहीं हूं, दौड़ता हूं, आपके लिए दौड़ता हूं। तो जाओगे ना, मेरा नमस्कार पहुंचाओगे ना, घर घर जाओगे? बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अभी फ्लाइट कैंसिल है, नो प्रायर इन्फॉर्मेशन, नथिंग। ऐसे अगर होगा ना ही उनके कुछ कोलैब्स हैं कि अगर मेरी आने वाली फ़्लाइट इंडिगो से है तो एटलीस्ट दे मस्ट हैव क्लियर दिस थिंग कि आप कुछ सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो सपोर्ट होना चाहिए कि आप इसको दूसरी एयरलाइन से हम आपको अरेंज करा रहे हैं सो दैट आपका इनकन्वीनियंस ना हो, आपका जो कंफर्ट जोन है वो ख़राब ना हो। जो जिससे हमने जो टिकट का वो कर रखा है, पेमेंट दे रखा है जिसका 4500, वो भी हमें वापस नहीं दे रहे हैं ना, वो हमें 7 डेज में देंगे। तो फिर अभी अगर वो देते तो समझ में आता, हम कर भी लेते, बट अभी तो वो भी नहीं दे रहे। वो भी 7 डेज में देंगे और जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी 7 डेज में देंगे। तो कोई कैसे जाएगा? बहुत गलत, बहुत बुरी है। ना रिस्पांस बरोबर है, ना बात कर रहे हैं बरोबर उन लोग, ना कोई काउंटर में बराबर रिस्पांस है उसका, और ना ही कोई पेमेंट का ऐसे बोल रहे हैं कोई लोग। My colleague Ridhima Bhatnagar is joining us with more. Very good morning to you, Ridhima. Ridhima, before the rest took them to the NCLT, the CEOs confirmed that they filed for insolvency proceedings. But perhaps an arbitration could have bailed them out of this mess. How do you think this is likely to play out? Morning, Shilpa. As you rightly pointed out, there are many questions now as to what could have been an easier step to try and get out of this mess, because as of now, no easier way of putting it. It's a complete mess for passengers who are stranded and for the future of the airline as well. Let's just give a sequence of events to our
viewers to help them understand what really has happened. Now, yesterday you had the airline informing that they will not be operating for the 3rd and 4th of May, that is 48 hours. They blamed this on Pratt & Whitney, saying because of faulty engines which have been given by Pratt & Whitney, this has resulted in grounding of 50% of their fleet. But what really stumped the industry, Shilpa, was when they announced that they are also filing for voluntary insolvency, which essentially means bankruptcy, which now means there is a question mark as far as the future of the airline is concerned. Now, remember, the airline requires about 103 engines by Pratt & Whitney, and they have about only half of them, which means 50% of the fleet is grounded. Now, the airline is saying that because of this grounding, they've had to pay revenue loss of almost 10,800 crores. But as we pointed out, this has now resulted into a legal battle between Pratt & Whitney and Go First as well. If you look at the statement that's coming from Pratt & Whitney, they in fact have put the blame back on the airline. What the legal saga will look like, that's one part of the story. What we're also now understanding, we heard from some passengers, they are stranded. While the airline has said that they will be giving refunds, there is no clear timeline. The other aspect that I'm also picking up by means of sources is that a lot of cabin crew and people who are working with the airline are also stranded. When this announcement of bankruptcy came, many of them were between their week offs or on layovers. They, in fact, have also now been stranded, some within the country, some overseas. They've been trying to contact the airline, but no response has come. Now, remember, Go First now becomes the first airline after Jet and Kingfisher that is filed for bankruptcy. Ridhima, how is this expected to impact the flyers? Of course, it's been said that no flights for the next 3 days. But, considering they filed for bankruptcy, I don't think there's going to be any relief for the airline or for flyers after that as well. Just a small correction, Shilpa, they've actually announced cancellation of operations only for 2 days. But technically, because they've filed for bankruptcy, we do know that it's almost unlikely that the operations will be back. But as per the official announcement, they've said that they will not be operating flights for the 3rd and 4th of May. What is also interesting is the official statement by Go Air is saying that there are technical operations. They're not saying that they don't have any future plan as far as the operation of the airline is concerned. But as you... Welcome back. You're watching CNN News 18 with me, Griha. Now, Go First Airlines, that's owned by the Vadia Group, has suspended flights for today, tomorrow and day after, owing to a severe fund crunch and has filed for bankruptcy. The airline has pending dues of oil marketing companies and more than half of its fleet has been grounded. The DGCA has issued a so-cause notice to the airline after they had cancelled fresh bookings, stating that no prior intimation has been given for the same, thereby violating the provisions already laid out. Now the airline has to respond within 24 hours as to why an action should not be taken against the Go First. And they have also blamed Pratt & Whitney for its insolvency, saying that they have supplied an increasing number of failing engines. And they are saying कि अभी flight cancel है, no prior information, nothing. ऐसे अगर होगा ना ही उनके कुछ कोलैब्स हैं कि अगर मेरी आने वाली फ़्लाइट इंडिगो से है तो एटलीस्ट दे मस्ट हैव क्लियर दिस थिंग कि आप कुछ सपोर्ट होना चाहिए. सपोर्ट सिस्टम के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो सपोर्ट होना चाहिए कि आप इसको दूसरी एयरलाइन से हम आपको अरेंज करा रहे हैं सो दैट आपका इनकन्वीनियंस ना हो, आपका जो कंफर्ट जोन है वो ख़राब ना हो. जो जिससे हमने जो टिकट का वो कर रखा है, पेमेंट दे रखा है जिसका 4,500, वो भी हमें वापस नहीं दे रहे हैं ना. वो हमें 7 डेज में देंगे. तो फिर अभी अगर वो देते तो समझ में आता, हम कर भी लेते. बट अभी तो वो भी नहीं दे रहे. वो भी 7 डेज में देंगे और जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी 7 डेज में देंगे. तो कोई कैसे जाएगा? बहुत गलत, बहुत बुरी है. ना रिस्पांस बरोबर है, ना बात कर रहे हैं बरोबर उन लोग, ना कोई काउंटर में बरोबर रिस्पांस है उसका, और ना ही कोई पेमेंट का ऐसे बोल रहे हैं क्यों. In some very unfortunate turn of events, low-cost carrier Go First has now filed for bankruptcy. But before we talk about whether the airline can revive itself or not, let's get you the sequence of events as we know. Yesterday, you had the airline announcing cancellation of flight operations from the 3rd to the 5th of May, and they called it because of technical issues. But what really stumped the industry was the announcement that came after that the airline has also filed for bankruptcy or voluntary insolvency. The airline as of now is blaming the US company Pratt & Whitney for faulty engines. Remember, Pratt & Whitney was the same engine supplier
for now defunct Kingfisher Airlines as well. You then had the regulator, DGCA, also stepping in. They issued a show cause notice to the airline. As of now, as promises that have been made to passengers, the airline has said that their money is safe and refunds will be given, but a timeline has not been specified. Now let's talk about the other big concern, which is what really led to Go First actually going bankrupt. Let's show you where things currently stand. Now, you would remember that Go First already has about 50% of its fleet grounded, and they're blaming Pratt & Whitney for it, which means about 25 of the A320neos are currently grounded. As we pointed out, the airline is blaming engine maker Pratt & Whitney for failing engines. The airline is also giving us some data. They're claiming that the groundings have already cost them 10,800 crores in revenue loss. The company is further saying that it has paid rupees 5,657 crores to leasers just in the last 2 years. Now we're also getting a statement that's coming in from Pratt & Whitney. And I'm quoting from what the statement says. That statement says, and I quote, "The company is committed to the success of air customers and we continue to prioritize delivery schedules of all customers." It further says, Pratt & Whitney is complying with the March 20 arbitration ruling, which is related to Go First. They're saying since this is a matter of litigation now, they will not comment any further, end quote. So what really happens now? As we know, operations will remain suspended till the 5th of May. The aviation minister has also stepped in, assuring of all possible help. Currently, Go Air has a market share for anywhere around 9 to 10%. But with 50% of its fleet being grounded, filing of bankruptcy, can the airline actually see a turnaround? We'll just have to see. With that, we are slipping into a very short break. More news and updates continue right here on the broadcast. Stay tuned. Step to try and get out of this mess, because as of now, no easier way of putting it. It's a complete mess for passengers who are stranded and for the future of the airline as well. Let's just give a sequence of events to our viewers to help them understand what really has happened. Now, yesterday you had the airline informing that they will not be operating for the 3rd and 4th of May, that is 48 hours. They blamed this on Pratt & Whitney, saying because of faulty engines which have been given by Pratt & Whitney, this has resulted in grounding of 50% of their fleet. But what really stumped the industry, Shilpa, was when they announced that they are also filing for voluntary insolvency, which essentially means bankruptcy, which now means there is a question mark as far as the future of the airline is concerned. Now, remember, the airline requires about 103 engines by Pratt & Whitney, and they have about only half of them, which means 50% of the fleet is grounded. Now, the airline is saying that because of this grounding, they've had to pay revenue loss of almost 10,800 crores. But as we pointed out, this has now resulted into a legal battle between Pratt & Whitney and Go First as well. If you look at the statement that's coming from Pratt & Whitney, they in fact have put the blame back on the airline. What the legal saga will look like, that's one part of the story. What we're also now understanding, we heard from some passengers, they are stranded. While the airline has said that they will be giving refunds, there is no clear timeline. The other aspect that I'm also picking up by means of sources is that a lot of cabin crew and people who are working with the airline are also stranded. When this announcement of bankruptcy came, many of them were between their week offs or on layovers. They, in fact, have also now been stranded, some within the country, some overseas. They've been trying to contact the airline, but no response has come. Now, remember, Go First now becomes the first airline after Jet and Kingfisher that is filed for bankruptcy. Ridhima, how is this expected to impact the flyers? Of course, it's been said that no flights for the next 3 days. But, considering they filed for bankruptcy, I don't think there's going to be any relief for the airline or for flyers after that as well. Just a small correction, Shilpa, they've actually announced cancellation of operations only for 2 days. But technically, because they've filed for bankruptcy, we do know that it's almost unlikely that the operations will be back. But as per the official announcement, they've said that they will not be operating flights for the 3rd and 4th of May. What is also interesting is the official statement by Go Air is saying that there are technical operations. They're not saying that they don't have any future plan as far as the operation of the airline is concerned. But as you rightly pointed out, this is going to be a mess for the passengers. It is highly problematic because an airline like Go First actually does not have an arrangement of alternatives with other airlines.
So when they cancel a ticket for the passenger, they actually are not rebooking them on another airline. They're saying refunds will come, but we don't know when those refunds will come. So essentially, if you were a passenger who was supposed to fly on Go First between the 3rd and the 4th of May, you're now stranded. You will have to shell out a lot more till the time your refund actually comes back. Ridhima, also, what's the word coming in from the government, the aviation ministry? We had a reaction that came in from the civil aviation ministry. Welcome back. You're watching CNN News 18. Now, security forces are gearing up for G20 meet in the valley. They have started area domination operations around the G20 venue in Srinagar. Sniffer dogs are being used to detect possible IEDs or explosive devices. CNN News 18's Ishan Vani has got us this ground report. Take a look. Just a couple of weeks remain for the all-important G20 meeting to be held in Srinagar. Behind me, we can show you these CRPF men are checking this entire area near the venue. Sniffer dogs along with BDS teams are part of this particular group of CRPF who are trying to make sure that the area remains safe and there is no IEDs or any kind of material which is put in place around this particular locality. Making this area and sanitizing this area is very important to keep this safe before and during that particular phase is very important. The forces are focusing on the security around the venue to ensure that there is no incident. There are also special QRTs of CRPF who look for any kind of material and are ready to engage at any point of time, are part of that team. You can see modern gadgets are also being used to detect if there are any IEDs which are placed inside this area or locality. There's a lot of renovation work being done. And that would be all from me. My colleague Ridhima Bhatnagar is going to be joining you on the other side with The Nation at 5. Thank you so much for watching. Good evening. You're watching Nation at 5 here on CNN News 18. I'm Ridhima Bhatnagar. As we enter the last leg of election campaigning in Karnataka, the political narrative is only heating up. A quota war, war of the manifestos and appeasement. The Prime Minister today lashed out at the Congress for wanting to ban outfits like the Bajrang Dal. The Prime Minister slammed the Congress's appeasement politics, saying that they're pleading for votes in order for their retiring leader to win in Karnataka. He also stated that when voters press the button to vote, they should think of Bajrang Dal and then cast their vote. This comes as various units of the Bajrang Dal also staged massive protests in response to the announcement that came as part of the Congress manifesto. The Congress chief Mallikarjun Kharge, though, on the other hand, has now hit out at the BJP, and he's gone on to say that the party, the BJP, is only pushing politics of polarization. कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लेती है, बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಓಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ। देखो, कांग्रेस ने तो भगवान राम के प्रति भी वही रुख रखा और बजरंग बली के खिलाफ भी वही रुख रखा। कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते चलते वो इस गिरावट तक आ गई है कि वोट बैंक के लिए कभी ये भी कह देते थे कि भगवान राम तो काल्पनिक, दुनिया की कोई ताकत ना बजरंग बली को रोक पाई है, ना उनके भक्तों को रोक पाएगी। दूसरा मैं कहूँ, उनकी भाषा कांग्रेस की, मोदी जी को मौत का सौदागर कह देना, नीच कह देना, कांग्रेस की मानसिकता क्या है, हताशा निराशा क्या है और कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है, और इसका जवाब हर चुनाव में जनता ने दिया है। ನಾವು ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮ್
ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತವರು ನಾವು ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಕದಲಬಾರದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಜರಂಗ್ ದಳ್ಗೂ ಹನುಮಂತಂಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹನುಮಂತನೇ ಬೇರೆ, ಬಜರಂಗ್ ದಳನೇ ಬೇರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಏನು ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬಜರಂಗ್ ದಳ ರಾಜ್ಯ. ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ. ನಾವೇನ ಬಹಳ ಪ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And this is a CNN News 18 exclusive. The Karnataka Chief Minister Baswaraj Bommai has also spoken exclusively to CNN News 18's managing editor Zakir Jacob on the Congress's announcement to ban outfits like the Bajrang Dal. Let's listen in. So tell me, this promise made by the Congress yesterday to ban the Bajrang Dal, they are saying it's a extremist organization, it is a militant organization. Why is the BJP and your extended other organizations making this such a big issue in the election campaign? See, Congress also knows very well Bajrang is not an extreme organization or a militant one. The issue is they try to satisfy the minorities, PFI and SDPI. In the real hurry to satisfy them, they have shown Bajrang Dal along with them. You can't weigh a nationalist thinking organization with the anti-national organization. See, PFI has been proved again and again. There are a lot of cases and a lot of people have been put behind bond for last so many years. That has been very clearly established. Whereas in Bajrang Dal, there is not even a single case of that sort. So it is very, very blatant. रिलीजियस रिजर्वेशन संविधान की आत्मा के खिलाफ और संविधान के निर्माताओं ने इसको हमेशा गलत कहा है, लेकिन ये पढ़ेंगे लिखेंगे तब समझेंगे ना। तो ये तो अनपढ़ों की जमात हो गई है। रेवड़ी बात तो भी नजर आ रही है कि जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनको भी अलग से फायदा पहुंचाएंगे सरकार। ये सब कुछ करेंगे जो समाज को बांट सकता है, उसके लिए ही ये पैदा हुए। क्या लगता है बजरंगबली का कहर टूटेगा? बजरंगबली का जो ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत धन्यवाद। ये हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वो करते हुए उनकी पार्टी करेगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के लोग, मानसिक दिवालियापन कांग्रेस के लोगों का दिखाई दे रहा है। और वो जो जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति वो कर रहे हैं वो खुद वो देख लें, अपने गिरेबान में झांक लें। और जहां तक बीजेपी की बात है तो वो सबका साथ, सबका विकास पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन केडी के साथ यतेंद्र शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, मांगड़ी। ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿತಾವಣೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮೂಲ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಬಜರಂಗ ದಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬಜರಂಗ ದಳದಲ್ಲಿ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮಾಯಕತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೆದುಳಿಗೆ ತುರುಕಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸದೆಬಡಿದೆ ನೀವು ಆ ಸಂಘ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹುಶಃ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು, ಆಗಲೇ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. It's a big political war of words that has now erupted after that announcement that came as part of the Congress manifesto, where they said if they are voted to power, they would want to ban outfits like the Bajrang Dal, and they compared it to the Popular Front of India or the PFI as well. Now, the BJP is questioning, one,
Where did this ban on the Bajrang Dal actually come from? And the BJP is also hitting out at the Congress saying this is appeasement and nothing else. But the rationale that has been given by the Congress is that this is not just against one organization, they're against any organization that becomes a threat as far as law and order situation is concerned. Will this be a turning point as far as the battle for Karnataka is concerned? Let's also now bring in our guests who in fact are joining us this evening. The BJP spokesperson Neeti Jain is joining us on the broadcast. We also have Bhavya Narasimhamurthy, Karnataka Congress spokesperson, also joining us on the broadcast. Good to have both of you on the broadcast with us. Bhavya, I'd like to begin the conversation with you first. Before I get into the attack that's coming in from the BJP, I just want to understand what is the kind of rationale that the Congress is working with. Where did this idea or this thought of wanting to ban outfits like the Bajrang Dal actually come from? Because till the manifesto was announced, we actually hadn't heard the Congress talking about this. So why did the Congress feel the need to come forward and ask for a ban as far as outfits like the Bajrang Dal are concerned? So when we made this manifesto, we kept every aspect of life of Karnataka people into consideration. It was very important for us to make sure that they feel safe under Congress government, which was the case till now. Until recently, Mr. Amit Shah, the Union Home Minister, came here and said, if Congress comes to power, there will be riots. He made a provocative statement and we even registered a complaint against it. And it is our responsibility. Every time there were attacks from Bajrang Dal on pubs, assaulting women, all of this happened. And police people have taken action against them. And there are